and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the Master captain has won the toss and elected to bat first. इस मैच के रेफरी दबंग वसीम. on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon or coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store coming soon on Amazon,
Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion. शॉर्ट पिच गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के हाथों में, डॉट गेंद। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, बीट हुए। बेहतरीन शॉट, 6 पेड़ से टकराई गेंद और सीधा बॉलर के हाथों में आते हुए एक ही रन मिलेगा। यहां पर पॉइंट पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज अल्ताफ। घुमा कर मारना चाहते थे, बीट हुए। चेक। इस मैच के दोनों अंपायर मंसूर और मुजाहिद। काफी अच्छी शॉट मिड विकेट की जानिब पर, फील्डर दौड़ते हुए एक टप्पा खाने के बाद, 2 टप्पा खाने के बाद उसे फील्ड करे और 1 रन, 2 रन। स्कोर 4। एक ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर 4।
अच्छा बॉल, फुल टॉस गेंद दी, उधर पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिला। इसी के साथ अजहर स्ट्राइक पे सामना करेंगे वाजिद का। फुल टॉस गेंद थी, उठा के मार दिया, वहां पे फील्डर मौजूद, कैप्टन अचीवर्स के कैप्टन 7-8। सिर्फ 1 रन 2 रन चौका बचाया अपनी टीम के लिए सादत। और पिच गेंद उठा के मार दिया, लेकिन झाड़ों के बाद, और ये बेहतरीन अटेम्प्ट, औंधे हो गए थे सादत। अच्छा अटेम्प्ट वहां पे, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट, औंधे होते होते गिर गए, बच गए। इसी के साथ अजहर फिर से स्ट्राइक पे सामना करेंगे वाजिद का। बेहतरीन क्विकर डिलीवरी थी, पूरी तरह से बीट हो गए अजहर यहां पे। अच्छा कमबैक यहां पे वाजिद का। फिर से ओवर पिच बॉल, फिर से सादत। आज सादत बहुत बिजी है फील्ड पे। इसी के साथ तौसीफ स्ट्राइक पे। लास्ट बॉल इस ओवर का, पावर प्ले का लास्ट बॉल। बेहतरीन बॉल, पूरी तरह से बीट। इसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ 15 रन्स। 3 ओवर के बाद 15 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इद्रीस अपना दूसरा ओवर करेंगे। इद्रीस बॉलिंग करेंगे अजहर को, जो काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अपनी पुरानी ले में दिख रहे हैं इद्रीस। अजहर के लिए थोड़ा फील्ड चेंज, डीप पॉइंट खड़ा दिया है यहां पे अल्ताफ को, भरोसा करके कैप्टन ने। बहुत ही अच्छी शॉट, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया यहां पे, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग मंसूर की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं अचीवर्स यहां पे। 3-3 रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी शॉट थी कवर्स पे, गैप में। और बीच बॉल उठा के मार दिया, फिर से सादत के पास बॉल, और ये रन आउट का चांस, लेकिन खराब थ्रो, सादत का हाथ पकड़ते हुए वहां पे। बहुत बिजी है सादत फील्डिंग में। और पिच बॉल थी, अच्छी शॉट थी, लेकिन झाड़ को लग के अंदर आ गया बॉल। बहुत सारे रन बच चुके हैं यहां पे अचीवर्स को। तो सिर्फ सामना करेंगे इद्रीस का। अच्छी शॉट है, हमें जान की फील्डिंग, और लेफ्टी में पकड़ लिया बॉल। क्या डांस करके पकड़ा बॉल को।
पहली बार खेल रहे हैं अजहर इस टूर्नामेंट में। और बीच बॉल गैप में फिर से इधर पे, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं फील्डरों के लिए। 4 रन। बहुत ही अच्छी शॉट यहां पे, गैप में 4 रन मिला अजहर को। और बीच बॉल, और कैच हो सकता है यहां पे मंसूर आते हुए, लेकिन बहुत फास्ट है मंसूर। मंसूर बॉल से फास्ट थे इसलिए कैच नहीं ले सके। इसी के साथ तौसीफ स्ट्राइक पे सामना करेंगे इदरीस का। फुलटास गेंद, और ये यहां पे फुरकान के पास बेहतरीन कैच, और इसी के साथ तौसीफ आउट होके पेविलियन जाते हुए, और इदरीस को एक विकेट मिला। इसी के साथ 4 ओवर के बाद स्कोर 24 रन्स। आफ्टर 4 overs 24 रन्स। अगले बैट्समैन हनीफ। वाजिद, अभी तक टाइगर को बॉलिंग नहीं मिली है। वाजिद सामना करेंगे अजहर। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया यहाँ पे, 1 रन। बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं अजहर यहाँ पे, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ नए बैट्समैन हनीफ स्ट्राइक पे सामना करेंगे वाजिद का। हनीफ शॉर्ट बॉल थी, पूरी तरह से बीट हो गए हनीफ। बहुत स्लो गेंद खिलाया यहाँ पे वाजिद ने। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे अचीवर्स के बॉलर्स और फील्डर्स। फिर से स्वीप, लेकिन इस बार थोड़ा चुके। अच्छा अटेम्प्ट वहां पे हनीफ का, और पूरी तरह से बीट हो गए। जमील माम ग्राउंड की तरफ आंदे लेटा डायरेक्शन। फुरकान ग्राउंड की तरफ आंदेगा ना बाग लेटा, लेट लेट ऊपर जो डाल रही। वाजिद तैयार। इस बार बैकफुट पे आके मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। अभी 5वां ओवर है ये। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे वाजिद। सिर्फ 1 रन दिया 4 गेंदों में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फेस 2 में वाजिद। फिर से डॉट। बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पे वाजिद का। लास्ट गेंद इस ओवर की जो बेहतरीन डाल रहे हैं वाजिद।
और ये कैच हो सकता है, और ये कैच, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे। 4 बॉल डॉट होने के बाद हनीफ 5वां बॉल सीधा फील्डर के हाथ में और ये आउट। इसी के साथ आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 25 रन, सिर्फ 1 रन का ओवर। अगले बैट्समैन तजम्मुल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं वाजिद फेज 2 में। मंसूर न्यू बॉलर, मंसूर स्ट्राइक पे अजहर। तीन ओवर बाकी हैं। 25 रन आ चुके हैं। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए अजहर। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर मुजाहिद का। अजहर सामना करेंगे मंसूर का। अच्छी गेंद थी, डिप हुआ बॉल, अच्छी बॉलिंग, अच्छा कमबैक। यहाँ पे टाइगर का कोई आवाज नहीं, चेहरे भी नहीं कर रहे यंगस्टर को। अजहर फुल टॉस गेंद उठा के मार दिया यहाँ पे झाड़ों की तरफ। 6 रन, बॉल ग्राउंड के बाहर। फुल टॉस गेंद का पूरा इस्तेमाल किया यहाँ पे अजहर ने। बहुत दुआएं मन्नतें कर रहे हैं यहाँ पे दबंग वसीम। दबंग वसीम बहुत दुआएं मन्नतें कर रहे हैं। सादत आप समझ चुके होंगे। अच्छी शॉट यहाँ पे अजहर की। कट कर दिया, बेहतरीन शॉट, 4 रन। कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया अल्ताफ ने। अल्ताफ चाहते तो 1 रन 3 रन बचा सकते थे अपनी टीम के लिए। बहुत लेजी, इससे अच्छा अजहर खड़ सकते थे यहाँ पे पॉइंट पे, एटलीस्ट भाग सकते थे। नो बॉल का इशारा एम्पायर मंसूर का। बहुत ही महंगा ओवर साबित हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही महंगा ओवर साबित हो रहा है यहाँ पे अचीवर्स को। अच्छा कमबैक और ये रन आउट का चांस, लेकिन उजैर वहां पे थोड़ा स्लो हो गए हैं, लंगड़ रहे हैं। और नए बैट्समैन तजम्मुल जो काफी अच्छे हार्ड हिटर हैं बंडा ग्राउंड के। और बिजवाल कैच ड्रॉप और रनआउट का चांस यहाँ पे, लेकिन आसानी से आ गए अंदर अजहर 1 रन के लिए। पहली गेंद में सिंगल। और इसी के साथ फिर से अजहर स्ट्राइक पे सामना करेंगे मंसूर का। लास्ट बॉल है इस ओवर का भी बाकी।
लास्ट बॉल, सामना करेंगे अजहर। फुलटॉस गेंद थी, लेकिन सादत के पास, सादत दीवार बन के खड़े हैं वहां पे, कोई मौका नहीं दे रहे बॉल को दीवार पे लगने के। आफ्टर 6 ओवर स्कोर इज 40 रन, 40 रन, बहुत महंगा ओवर। और इसी के साथ The online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion the online store coming soon. और बीच बॉल उठा के मार दिया, फिर से सादत दौड़ते हुए, लेकिन 6 रन, कोई मौका नहीं। ग्राउंड के बाद पहली गेंद में छक्का दे दिया यहाँ पे तन्नू ने, जख्मी टाइगर। पहली गेंद में छक्का, 40 पर 6 रन। क्या टाइगर कमबैक करेंगे? काफी अच्छे तेज गेंदबाज हैं टाइगर। दबंग 11 बहुत खुश होते हुए यहाँ पे। अजहर फिर से तैयार, सामना करेंगे तन्नू का। बेहतरीन कमबैक और अच्छा डिफेंस, बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं यहाँ पे अजहर अपनी टीम के लिए। क्या तेज डिलीवरी थी वो, गुस्से में टाइगर। अच्छी बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे तन्नू। अच्छी फील्डिंग वहां पे फुरखान की। 1 रन बचा है अपनी टीम के लिए। इसी के साथ तजम्मुल स्ट्राइक पे। तज्जू सामना करेंगे टाइगर का, तन्नू का। अल्ताफ के पास बॉल, लेकिन अल्ताफ एज यूजुअल वेरी लेजी, एज यूजुअल अल्ताफ वेरी लेजी बॉय। अल्ताफ भाग के जाके मारते तो भी रन आउट हो सकते थे। बेहतरीन कमबैक यहाँ पे घुराते हुए। पहला बॉल और पिस दिया, उसके बाद बेहतरीन लाइनर लेन डाल रहे हैं यहाँ पे तन्नू, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। जोर से आवाज कैच की यहाँ पे और ये आउट। टाइगर ने अपना बदला लिया, छक्के के बाद विकेट लिए यहाँ पे लास्ट बॉल में। और इसी के साथ अच्छी बैटिंग करके अजहर वापस जाते हुए स्कोर हुआ 48 रन। सिर्फ 8 रन, 5 गेंदों में 2 रन दिए यहाँ पे। पहले बॉल छक्का देके टाइगर ने अपना शिकार पूरा कर लिया। बैट्समैन इनाम, नए बैट्समैन इनाम। तज्जू की बैट से अभी कोई छक्का चौका नहीं आया है। लास्ट ओवर बॉलिंग करेंगे अल्ताफ, जो लेजी अल्ताफ हैं। तपस्वी अल्ताफ।
उठा के मार दिया यहाँ पे लेकिन झाड़ों के पास बॉल और ये सादित जम मार सकते थे। सादित अगर वॉच करते तो कैच ले सकते थे। अच्छा ट्रे यहाँ पे तज्जू का, इसी के साथ इनाम स्ट्राइक पे सामना करेंगे अल्ताफ का। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, बीट हो गए यहाँ पे, डॉट बॉल मिला। 4 बॉल बचे हैं इस ओवर के, इस इनिंग के। तन्नू कुछ समझाते हुए अल्ताफ को, ऐसा डाल रहे वैसा डाल रहे। फुल टॉस बना के मारना चाहते थे। फिर से फुल टॉस गेंद और इद्रिस का बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट। जांटू रोड्स लग रहे थे इद्रिस। इनाम स्ट्रेट पे मारना चाह रहे, और उधर पे तन्नू टाइगर इतना तेज आके बॉल पकड़ा, सिर्फ 1 रन। इसी के साथ लास्ट बॉल इस इनिंग का, सामना करेंगे तज्जू। फिर से मार दिया उठा के, लेकिन फिर से झाड़ों के पास। वाजिद वहां पे बहुत लेजी फील्डिंग। वाजिद कितने रन मुजाहिद? 2 रन। इसी के साथ इनिंग का समाप्त। 53-54 is the target. 53-54 is the target. Sorry, 55 is the target. 54-55 runs.
2 बॉल डॉट करा के 2 बॉल वाइड दे चुके हैं यहाँ पे रहमान। खतरनाक बॉल डाले, 2 बॉल स्टार्टिंग। रहमान बेहतरीन बॉलिंग, फिर से तेज गेंद, 145 की स्पीड थी। जोरदार अपील, पूरी तरह से बीट हो गए और एम्पायर का इशारा, आउट। इसी के साथ रहमान जैसा कहा था, इतनी तेज गेंद डाली वहां पे उजैर को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे रहमान। वन 145, 143। देखते हैं वाजिद कैसा सामना करेंगे इतनी तेज गेंदों का। टो क्रशर बॉल था वो, टो क्रशर, वखार यूनुस जैसा टो क्रशर, 144 की स्पीड में। अच्छी बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग, वहां पे डिलोन मौजूद ग्राउंड में। डिलोन अभी तक कमेंट्री में नहीं आए हैं, इस टूर्नामेंट में गिला है। आफ्टर 2 ओवर स्कोर इज 8 रन। बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे रहमान की, सिर्फ 2 रन दिए, वो भी वाइड में दिए, बैट से नहीं दिए। डिलोन से गुजारिश है आफ्टर द मैच पूरा दिन ग्राउंड में कमेंट्री देंगे। इस टूर्नामेंट में कुछ काम नहीं किया डिलोन ने अभी तक, नहीं तो कमेंट्री एटलीस्ट देते हैं। अगले बॉलर हनीफ, बहुत देर के बाद स्ट्राइक पे आए हैं फुरखान। फुरखान बहुत देर के बाद स्ट्राइक पे नहीं है। वाइड गेंद, मास्टर्स काफी एक्स्ट्रास दे रहे हैं। क्या बॉल था वो, डांस कर चुके हैं यहाँ पे फुरखान, एक स्टेप डाल चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप था फुरखान का।
और पिच बॉल उठा के मार दिया झाड़ों के पास, 4 फील्डर मौजूद वहां पे, और लेकिन कैच ड्रॉप, अच्छा अटेम्प्ट लेकिन 4 रन, अच्छा अटेम्प्ट, लास्ट मोमेंट पे बॉल दिखा लेकिन कोई फायदा नहीं, 4 रन मिले यहाँ पे फुरखान को। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे फुरखान। दिल की बात जान ले रहा फुरखान, फिर से और पिच बॉल, लेकिन फिर से झाड़ों के बाद लगते हुए यहाँ पे तौसीफ 2 रन आसानी से जॉगिंग करके ले रहे हैं यहाँ पे फुरखान। दबंग 11 काफी उदास, बहुत अच्छी बॉल लेकिन आ रही है, बहुत ढीली बैटिंग, आउट हो गए, बहुत ही लेजी शॉट थी और दबंग यहां पे नाचते हुए। बहुत ही लेजी खेल के जा रहे हैं यहाँ पे फुरखान, अच्छा स्टार्ट दे चुके थे। अगले बैट्समैन सादत, अचीवर्स के कैप्टन सादत, जैसे जैसा विकेट जा रही है दबंग 11 बहुत खुश हो रहे हैं। सादत क्या मायूस देंगे दबंग 11 को? अच्छी शॉट, सेंसिबल शॉट, गैप में खेल जाए वहां पे रनआउट का चांस, लेकिन कोई कवर नहीं, 1 रन आसानी से मिला और वाजिब स्ट्राइक पे। अच्छा कमबैक यहाँ पे हनीफ का एक चौका देने के बाद 1 विकेट लिया और अच्छी फील्डिंग वहां पे शाहुल की। अच्छा कमबैक यहाँ पे मास्टर्स का, आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर इज 16 रन, 16 runs after 3 overs. सिक्सटीन रन आफ्टर 3 ओवर्स, 16 रन। इसी के साथ फिर से रहमान को बुलाया गया है, तेज गेंदबाज रहमान साजी सामना करेंगे अचीवर्स के कैप्टन सादत। रहमान बॉलिंग करेंगे सादत को।
पहली गेंद में उठा के मार दिया सादत ने। एम्पायर का इशारा देखना चाहते हैं। दो रन, अच्छी शॉट यहां पे सादत की। 2 रन। सादत बेहतरीन शॉट मारा यहां पे रहमान को, लेकिन एम्पायर बॉल और ये यहां पे झाड़ा है। 2 रन। अच्छी शॉट गैप में खेल दिया यहां पे तौसीफ, फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से मिला। बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं यहां पे सादत। जैसे ही शॉट मारे यहां पे दबंग थोड़ा मुंह खोल लिए थे। वाजिद सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद फिर से झाड़ेंगे पास, देखना चाहते हैं क्या होता है। ये अंदर आता है, अंदर आ गया बॉल फिर से। बेहतरीन फील्डिंग वहां पे झाड़ों की। रहमान बहुत ही लकी बॉय, लकी बॉय। रिवर्सिव बहुत मुश्किल है रहमान को खेलने के लिए, बहुत तेज डाल रहे हैं रहमान। जोरदार जबरदस्त अपील वहां पे तजम्मुल की। नॉट आउट का इशारा एम्पायर मंसूर का। वन 146 थी वो स्पीड। वाजिद रिवर्सिव खेलना चाहते थे 146 की स्पीड में। निकल के मारना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला। या इसी के साथ सादत स्ट्राइक पे, जो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कैप्टन सादत अचीवर्स के। व्हाट अ शॉट, 1 रन मिला यहां पे। इसी के साथ आफ्टर After 4 overs, score is 23 runs. 23 runs after 4 overs. बहुत ही जबरदस्त मैच चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे टाइगर बैट लेके आए, ऐसा नहीं आ सकता। उठा के मार दिया सादत ने 6 रन। बेहतरीन शॉट सादत की, गुस्से में सादत। बहुत ही शॉर्ट बॉल था वहां पे, इसका पूरा फायदा उठाया सादत ने। काफी अग्रेसिव लग रहे हैं सादत अपनी टीम के लिए। इनाम फिर से तैयार, सामना करेंगे सादत। फिर से उठा के मार दिया कट शॉट यहां पे। हसीब की अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं यहां पे सादत अपनी टीम के लिए।
वाजिद, फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से छक्का, वही शॉट, 6 रन का इशारा एम्पायर का। बहुत ही महंगा ओवर साबित हो रहा है यहां पे। दो छक्के दे चुके हैं यहां पे इनाम। यहां पे दबंग 11 के कैप्टन सुंद हो गए हैं। बॉल दी बंद कर दी यहां पे अचीवर्स के कैप्टन ने। फिर से शॉर्ट बॉल था, बीट हो गए यहां पे वाजिद अफसोस करते हुए। फिर से शॉट था लेकिन नीचे से बॉल, ग्राउंड शॉट इस बार। 1 रन मिला यहां पे। इसी के साथ डेंजरस सादत स्ट्राइक पे। सादत स्ट्राइक टू तौसीफ। DJ, no argument. Fielder cuts it off, only a single. Brings Wajid on strike. Tries to hike it. Only a single. "16 balls, 15 runs required." Captain of Achievers still on strike. Tries to hike it, misses, dot ball. Tries to hike it again, misses, dot ball. Excellent bowling from Hanif. Goes towards the mid-wicket region. Fielder cuts it off. On the throw, run out. Excellent throw from Hanif. वाजिद आराम से सिंगल ले सकते हैं लेकिन बैटिंग को बहुत मारे। सादत सामना करेंगे अनीस का। तेरह गेंदों में 14 रन चाहिए। अच्छा ओवर यहां पे कैप्टन अनीस का और कैप्टन सादत को डालेंगे बॉलिंग।
और बीच का गैप में खेल दिया यहाँ पे, 1 रन। इसी के साथ बेहतरीन ओवर यहाँ पे अनीस का। आफ्टर 6 ओवर स्कोर इज 42 रन। 12 बॉल 13 रन। $55 is the target. All 12 runs. निकल के मारा यहाँ पे, रहमान के पास बॉल, रहमान दौड़ते हुए 1 रन। अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे। टेन बॉल्स 11 रन। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, बीट हो गए सादत। 9 बॉल 11 रन रिक्वायर्ड। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी मैच। दो रन लेना चाहते हैं वहां पे, और ये खराब थ्रो, 2 रन मिला यहाँ पे। थोड़ा सा फंबल हो गए शाहुल वहां पे। सादत को नहीं हो रहा है भागने के लिए। दमंग खुश होते हुए यहाँ पे सादत को हम तो देखते हुए। फिर से तैयार सादत, सामना करेंगे हनीफ का। नवीद भी के पास बॉल, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी। अच्छी लेन डाल रहे हैं यहाँ पे हनीफ, कोई मौका नहीं दे रहे। इधर सामना करेंगे हनीफ का। और आउट, स्टंप आउट। इसी के साथ ओवर के बाद स्कोर हुआ 47 रन। 6 बॉल्स 8 रन। अभी भी टाइगर बैटिंग के लिए नहीं आए हैं, 6 बॉल 8 रन चाहिए है। अफसर आए हैं बैटिंग को, नए बैट्समैन अफसर। 6 बॉल 8 रन। बहुत ही बेहतरीन मैच चल रही है यहाँ पे, क्रूशियल मैच। सादत काफी थक चुके हैं, लेकिन बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लास्ट ओवर करेंगे तौसीफ, 6 गेंदों में 8 रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर।
6 गेंदों में 8 रन। सादत सामना करेंगे तौसीफ का। 6 गेंदों में 8 रन, 6 बॉल्स 8 रन। कैप्टेंसी इनिंग खेल रहे हैं सादत। क्या सादत अपनी टीम को जिताएंगे? बहुत सारे प्रिडिक्शन चल रहे हैं यहां पे सादत के लिए। एज बॉल आउट। अभी तक तो सुन बैठे हैं वसीम, दबंग 11 के कैप्टन। तौसीफ 6 गेंद 8 रन। पटक के मार दिया यहां पे और रनआउट का चांस। बहुत ही बेहतरीन रनिंग वहां पे अफसर की। पौ पिच पे ही पटक दिया यहां पे तौसीफ ने, आधी पिच नहीं, पौ पिच। आधी पिच पे नहीं, पौ पिच पे पटक दिया, लेकिन 1 रन मिला। दो रन लेना चाहते हैं यहां पे सादत, लेकिन 1 रन मिला। बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पे अनीस की। 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। उठा के मार दिया वहां पे और ये आउट। बेहतरीन बॉलिंग यहां पे, बेहतरीन बैटिंग करके जा रहे हैं सादत, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए। इसी के साथ नए बैट्समैन मंसूर, 3 बॉलों में 6 रन चाहिए, सिर्फ 1 हिट और मैच ओवर। दबंग अभी भी सुन बैठे हैं। बेहतरीन बैटिंग करके जा रहे हैं सादत। सिर्फ सादत की विकेट से खुश हैं, लेकिन अभी मैच से खुश नहीं है। 3 बॉल 6 रन। लेफ्ट हैंडर मंसूर, 1 मिडिल हुआ तो मैच हो सकती है, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहां पे तौसीफ। देखते हैं मंसूर अपनी टीम को जिताएंगे या तौसीफ अपनी टीम को जिताएंगे। काफी सारा डिस्कशन यहां पे मास्टर्स का। मंसूर सामना करेंगे तौसीफ का। बेहतरीन बॉल, बीट हो गए, 1 रन ले लिया यहां पे। 2 बॉल 5 रन। अफसर जो काफी जाने माने हुए फिनिशर हैं, धोनी के बाद अफसर, सामना करेंगे तौसीफ का। 2 बॉल 5 रन्स। अच्छा अटैक कर रहे हैं यहां पे अभी तक। उठा के मार दिया गैप में बॉल और सीधे फील्डर के हाथ में।
बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे, 1 बॉल 5 रन चाहिए। टाइगर अभी तक बैठे हुए हैं, 1 बॉल 5 रन चाहिए। अगले बैट्समैन आरिफ, क्या आरिफ मैच जिताएंगे एक छक्का मार के? दबंग फिर से खुश। एक बॉल 5 रन। अगर ड्रॉ होगा तो सुपर ओवर होगा। 1 बॉल 5 रन, 1 बॉल 5 रन। उठा के मार दिया यहाँ पे, 6 रन जिता दिया यहाँ पे आरिफ ने। फुल टॉस बॉल दी दबंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया यहाँ पे, लेकिन लास्ट बॉल फुल टॉस गया और आरिफ ने इसका पूरा फायदा उठाया 6 रनों के लिए। दबंग काफी बेजार।
Lovely shot over the covers. It was in the air. There was a chance. Dropped, and that's run towards the boundary for 4 runs. What a start for Al Fateh here. Sahil, next ball, bowling to Danish. It was in the air. There was a slight bit of chance. Fielder couldn't get under the ball. Immediate change in the field. Mudassir come towards the covers region. Short delivery beaten completely. Dot ball. Danish wasn't sure if he wanted to pull that. Dot ball is the result. Sahil bowling to Danish. Lovely delivery, good shot in the air, and that is it. First ball, he gets a chance, but not this time. Danish departs. And that's the first strike for MCC. यासीन पानी का बॉटल का तेले लगा जाओ.
Nayazu is a player who has been man of the tournament in one of the tournaments here in East Ground. He is pretty talented. If he stays for a long period of time, he can get runs for Al Fateh. Lovely shot towards the boundary. Mid-wicket, nobody down there, running towards the boundary. Good job by the fielder, cuts it down, gets 2 runs. 2 important runs added to the scoreboard. And that is what is important for Al Fateh and dot balls. Mudda bowling to Nayazu. Outside the off stump, white signal by the umpire. Mudassir trying to be cheeky. Short delivery again. Beaten completely. Dot ball is the result. Short delivery again. Waiting for umpire's signal. Umpire's unmoved. Dot ball is the result. Nayazu is playing the waiting game here. Mudassir bowling to Nayazu. Lovely shot. Nobody down there. This is running towards the boundary. Trees comes into the picture. Nayazu looking for a second run. Ehtisham not interested. Ehtisham on strike for the first time. Will be facing Mudassir. He can be pretty dangerous when he gets going. Reverse sweep, gets a quick single. MCC will be happy. They got away with this. Nayazu back on strike. Facing Mudassir. Another reverse sweep attempt. Doesn't trouble the scorer. That's the end of the over. Score moves on to 11 runs. And there's no loss of wickets in this over. MCC seems to be happy with the start. 2 dangerous batsmen at the center. They stay for a couple of more overs. They can be dangerous. We all know the capability of these batsmen. It's gonna be Farhan who will take the bowling charge for MCC. Lovely delivery, beaten completely. Dot ball is the result. Ehtisham looking at Jantar Mahal, but the ball is in Uzair's hand. Lovely delivery, beautiful delivery. Ehtisham didn't have a clue about that. What a delivery that was by Farhan. Ehtisham still trying to understand how did that come inside. Wrapped on the legs, in fact, beaten completely. Reverse sweep attempt. No damage done. Another dot ball. This is brilliant bowling performance by MCC. Farhan taking the responsibility on his shoulders.
Lovely delivery, outside edge. Doesn't matter. Keeps it down for a single. Wild throw by Wasim could have resulted in overthrow. Niazu back on strike, facing Farhan for the first time. Decent over so far. Can he get a boundary? Can he get a wicket? Down the track, nothing happens. Uzair misses a stumping chance. How costly is this gonna be? Uzair missing an easy stumping chance of Niazu. Farhan bowling to Niazu. Another good shot for a single, a quick single. That's the end of a wonderful over. Score moves on to 13 runs. Only 2 runs coming in that over. 13 runs for the loss of 2 wickets. This is interesting tactic by Al Fateh's captain. He is dangerous himself, but he is sitting still in the dugout, giving the responsibility to the youngsters, Niazu and Ehtisham. Both are dangerous with the bat, but haven't done the damage yet. Score 13 runs, 1-3. खतर में बेटा है सो फाइनल. Mudassir back into the bowling attack. Trying to sweep that, going for a conventional sweep this time, beaten completely. Dot ball is the result. This is good period for MCC. Quiet period for MCC. No runs flowing at this moment. Lovely shot, lovely bowling. Niazu trying to cover that outgoing delivery, but beaten completely. Another one, another beautiful delivery. What an over this is by Mudassir. Excellent bowling this is. We can see the tension in Al Fateh's dugout now. Lovely shot. This is going towards the long on region. Beauty of East. Trees play their hand again. Single is the result. First bad ball of the over. Niazu could not capitalize though. And for his luck, Trees played their part as well. Ehtisham, the dangerous striker, back on strike, facing Mudassir. Can he send this out of the ground? Quite capable. Quite capable. I am sensing there's a boundary or a wicket in this delivery. What is going to happen now? Mudassir to Ehtisham. Big heave, beaten completely. Dot ball is the result. This is brilliant bowling by Mudassir. MCC will be happy with this. Ehtisham has been off color so far. Another heave, another dot ball, beaten completely. What an over, 1 run. That's the end of the over. 14 runs on the board after the completion of 4 overs.
After bowling that brilliant over, Mudassir looks tired, needs some water, drinks break. Beautiful start by MCC so far, 14 runs. They would be happy with this start. Al Fateh's dugout seems to be tensed at the moment. They have got beautiful batsmen sitting at the dugout. Down the leg side, wide signal. All of a sudden, there's energy in Al Fateh's dugout. They feel there's going to be movement of score now. I'll tell you what, these two are quite capable batsmen. Down the leg side again. Wide signal by the umpire. So 2 balls, 2 wides in this over. This is the start Al Fateh would be looking for. MCC has been quite disciplined to keep these 2 batsmen quiet. They are dangerous strikers of this tennis ball. To keep them quiet has been an excellent bowling performance. Lot of talk, lot of instructions. Sahil talking to Farhan now. Lovely shot. I was telling you that these two are quite capable batsmen. That's the first glimpse of it. Perfect sweep for a 6 runs. Now this is gonna be interesting. Has the momentum shifted towards Al Fateh? Is this the break Al Fateh was looking for? Niazu getting the first strike from his bat. 6 runs. Farhan has conceded 8 runs with just a ball bowled as of now. Square cut, running towards the covers region. Wasim, the fielder, keeps it down for a single. Ehtisham back on strike. He's going to face Farhan. Farhan bowling to Ehtisham. 9 runs conceded so far. Lovely delivery. Sensibly played. This is interesting tactics by Ehtisham. He doesn't stay calm. He goes for boundaries. But looks like he wants Niazu to take the charge. So Niazu is back on strike. Facing Farhan. Trying to heave that away. Fumble by Uzair. Bats keeping this is. This is not good cricket. Good delivery resulting in a run. And most importantly, Ehtisham is now back on strike. Farhan doing a good job after conceding a 6 in the delivery. Lovely delivery, beautiful delivery. Ehtisham trying to sweep, beaten completely. This is good comeback by Farhan. Short delivery, trying to cut that away, beaten completely. That's the end of the over. Score moves on to 25 runs.
2-5. 25 runs after the completion of 5 overs. What a commendable job MCC has done to keep it under 6 with these two batsmen on strike. "25 runs on the board, 5 overs completed." वसीम से गुजारिश है बैट लेकर फील्ड के अंदर आए। अल फतेह के कप्तान बैट लेकर फील्ड के अंदर आए। We have some football fans coming all the way from Qatar to watch this tournament, B2PL Season 6. Ashfaq bowling to Nayazu. First ball is a dot ball. Another sweep shot, gets an edge, gets a single. Ehtisham back on strike, facing Ashfaq. Trying to heave that towards the next side, looking for a quick single. This is suicidal. Ehtisham is out in the form of a run out. There was some misunderstanding between these two, costing the wicket of Ehtisham. This is a big wicket. All right, so out goes Ehtisham. In comes the dangerous Mansoor. Quite capable of big hits. His hits are clean hits. Ashfaq bowling to Mansoor. Short delivery, trying to heave this away. This is in the air. This is going to be a big wicket if he gets it. Mansoor out on a duck. Mansoor departs for a duck. This is not good news for Al Fateh. Mansoor departs without disturbing the scorer Altaf.
No ball. No ball. Free hit. Nayazu on a football. Wakarange. Mele wakare. Sonna keka matinga. Lovely delivery. Free hit gone a waste by Nayazu. What a waste this is. This is definitely not good batting by Al Fateh. Captain of Al Fateh, Wasim on non-striker's end. Can he do some magic? Lovely delivery. Another good delivery. Another dot ball. That's the end of the over. Score moves on to 28 runs. 28 runs. 29, correction. 29, 2-9 on the board after the completion of 6 overs. Sahil back into the attack, bowling to Al Fateh, wrapped on the pads. Dot ball is the result. Wasim, the Al Fateh captain, known famous for Domara. Another heave, another dot ball. The bat is swinging pretty hard, but the score is not. Dot ball is the result. Sahil with 2 dot balls in this over. Sahil bowling to Wasim again. Down the leg side this time. Wide signal by the umpire. Umpire Rahim and Hanif doing a good job in this match so far. It is pretty hot out there. Lovely shot. This is going towards the long on region. Fumble, but makes no mistake, and that's another wicket. Wasim departs. This is another duck for Al Fateh. The Al Fateh captain departs. Sufyan gets a single. Nayazu back on strike. He's gonna face Sahil. Sahil bowling to Nayazu, who has been there for quite some time. Trying to sweep that, wrapped on the pads, beaten completely. Dot ball is the result. Nayazu
has been playing right from the start. It hasn't done any damage so far, which can cost MCC. MCC will be happy with what they are doing at the moment. Lovely shot set to the fielder. Chance of a run out. Uzair this time with some magic. Nayazu departs now. Al Fateh's bad form continues with the bat. Ammu is at the center with the departure of Nayazu. ये बैटिंग हुआ रे. B2PL Season 6, sponsored by Purvika, Pink Gold, World Gym, humandtum.com, Bflix channel, Shorewave, Zishan Kebab Center, supported by M. Ishtiaq Ahmad, organized by Uzair, Shoaib and friends. This beautiful tournament, B2PL Season 6. दर्शकों की मांग फिरदौस का नाम ऑर्गेनाइजिंग टीम में. Lovely shot by Sufyan going towards the covers region. 6 runs is the result. Jasim conceding 6 of the first ball. Sufyan looking dangerous at the moment. Jasim to Sufyan. Last ball, last over of this innings. Trying to play a sweep shot, beaten completely. Dot ball is the result. Good comeback by Jasim. Shot delivery, trying to pull this away. This is in the air. Can this be taken? No, it's not. It's dropped. 2 runs completed. 2 runs completed. Last over of this inning, Sufyan has to get some runs for Al Fateh. Short delivery cut away in the air, coming towards the covers region. Again, Trees comes into the picture. This can be a run out. Waiting for umpire's signal. Not out. 2 runs completed. Sufyan playing a gem of an inning for Al Fateh. What was he doing in the dugout? If he can middle the ball so well. Sufyan back on strike, facing Jasim. Lovely shot again. This is running towards the boundary. Mudassir running like a panther. 2 runs completed. Beautiful shot again. Trees comes into the picture. The batsmen are pretty quick. And they complete 2 runs by the time the ball is collected. That's the end of the inning. Score moves on to 45. 46 runs is the target for MCC. A lot of fan following for Shoaib. I'm not sure they are friends or enemies, but they are supporting.
Friends, is what is the confirmation I get from Sadat. Lot of fan following for Shweb.
Slow one. Wasim trying to hit that. It's a no ball. It's a free hit. So is that going to be out? No, it's not. In one delivery, Wasim got it twice. One of hit wicket, one of a catch. It was a free hit ball. खाली रनआउट है सुबह। अल फतेह के कप्तान पूरे जज्बे में विकेट की मांग करते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं, अंपायर्स उनके फेवर में नहीं है। इसी के साथ सलमान सामना करेंगे एहतिशाम का। काफी दिलचस्प स्टार्ट एमसीसी के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, पूरी तरह चूके सलमान। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा एहतिशाम की तरफ से। सलमान पूरी तरह से चूके बोल्ड होते हुए पवेलियन वापस। उज़ैर एमसीसी की तरफ से बैटिंग की जिम्मेदारी लेते हुए अब सामना करेंगे एहतिशाम का। अल फतेह के कप्तान वसीम सलमान की विकेट लेकर खुश। अल फतेह को अब लगता है कि यह मैच वो जीत सकते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, पहली बॉल पे उज़ैर को वापस पवेलियन भेज दिया, सीधे विकेटों पर बीट होते हुए बोल्ड। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा। काफी फैन फॉलोइंग उज़ैर की। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा एहतिशाम की तरफ से। 2 बॉल में 2 विकेट ले चुके हैं, हैट्रिक बॉल। तनसीर रिवर्स स्वीप खेलते हुए, मंसूर की काफी अच्छी कोशिश। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। फिर से एक बार एहतिशाम नो बॉल के साथ फ्री हिट का मौका देते हुए एमसीसी को। जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उतनी खराब बॉलिंग भी कर रहे हैं। नो बॉल डालते हुए 2 बॉल में 2 विकेट चटकाए थे। फिर से एक बार एहतिशाम बॉलिंग करेंगे तनसीर को। तनसीर फ्री हिट, फ्री हिट डाउन द लेग साइड। अंपायर का इशारा, वाइट बॉल सिग्नल। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हैं या नहीं, देखते हैं। तनसीर स्ट्राइक पर। फिर से एक बार स्वीप शॉट खेलते हुए मिड विकेट रीजन पर काफी अच्छी फील्डिंग, सिंगल लेने में कामयाब। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके। वसीम स्ट्राइक पर सामना करेंगे एहतिशाम का। स्लोअर वन, स्लोअर गेंद थी। वसीम पूरी तरह से चूके। डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 24 रन, 24 रन बोर्ड पर।
दो मारा बा उनको बॉलिंग सिखाता है उनको मारती ना मत में दो मारा अब मामा दो दो मारा खेल रहा नहीं खाया जबरदस्त डाल रहा है स्कोर बोलो जी 24 रन 24 रन स्कोर बोर्ड फिर से एक बार उसामा कैमरे मार डालेगा बाद काफी खतरनाक सिंगल लेने में कामयाब तंसीर और वसीम के बीच में अच्छा तालमेल उसामा बॉलिंग की ओर से अल फतेह के लिए बॉलिंग करते हुए काफी अच्छी गेंद एज लगते हुए एजाज कीपिंग पर जब तक बॉल कलेक्ट करते एक रन लेने में कामयाब तंसीर स्ट्राइक पर सामना करेंगे उसामा का अल फतेह के कप्तान अपने पूरे ट्रम्प कार्ड्स खेलते हुए उसामा का ओवर इसी ओवर में करा दिया 5वें ओवर में अगली मैच वॉरियर्स और रेंजर्स के बीच में दोनों के कप्तान को ड्रेस की तरफ आने की गुजारिश टॉस के लिए वॉरियर्स और रेंजर्स के कप्तान तंसीर छक्का मारने की कोशिश करते हुए बाहरी किनारा बैट का इसी के साथ उसामा विकेट लेने में कामयाब वसीम खुश होते हुए अपनी चाल की कामयाबी पर अपने स्ट्राइक गेंदबाज को बॉलिंग की जिम्मेदारी देकर विकेट लेने में कामयाब अल फतेह के कप्तान वसीम बढ़ता हुआ स्कोर एमसीसी का 26 all of a sudden this match is now in balance between MCC and Al Fateh. Mudassir is at the center. The match which was looking one-sided is now in balance. Wasim and Mudassir at the center. Mudassir is gonna face Osama, the tall pace bowler. That is an interesting call by Mudassir, trying to play a reverse sweep of the first ball after losing a wicket in that over. Interesting strategy by Mudassir. Osama bowling to Mudassir. Short delivery. Not sure what was Mudassir trying to do. He was only trying to see the Jantar Mahal. That's the end of the over. Score moves on to 26 runs. 26 runs on the board. Four overs up. 4 overs up. 24 balls, 20 more runs needed. Can Al Fateh sneak through and win this game?
24 balls, 20 more runs needed. Can Al Fateh sneak through a win? Wasim still believes they can win this match. He continues to motivate his fielder, continues to get the fielders in place, ensures everybody is on the toes. Wasim standing at covers region, Sufyan covering the mid-wicket region. Ehtisham will take the bowling responsibility. Wasim is on strike. Lot of field movement. Ehtisham bowling to youngster Wasim, who's looking dangerous. Square cut straight into the fielder's hand. Fumbles, still fumbles. Keeps it down for a single. Mudassir back on strike. It's gonna be interesting what he does. He wanted to send one towards the offside, one towards Jantar Mahal in the last over. Could not do much. Beaten completely. They want to ensure they cover the offside field for Mudassir. They know that he can play a reverse sweep. They are covering the offside field. The offside field is packed now. Deep point, deep cover, long off. शुएब की काफी फैन फॉलोइंग इधर पे फील्ड पर शुएब आ चुके हैं. क्या ये अल फतेह के लकी मैस्कॉट हो सकते हैं? क्या शुएब के कदम अल फतेह को जीत दिला सकती है? जानने के लिए देखिए अगले चंद ओवर. क्या शुएब के कदम खुश नसीब साबित होंगे या बदनसीब साबित होंगे अल फतेह के लिए? Ehtisham bowling to Mudassir. Interesting field set. Offside packed. Lovely delivery. Trying to cut that away. Beaten completely. Dot ball is the result. Suddenly Al Fateh believe that they are in this game. They can win this match. Wasim believes. Al Fateh believes. Shoaib believes. Lovely delivery, equally well played. Sensible cricket now by Mudassir. Goes down to the non-striker's end. Wasim back on strike. Change of bat. Change of bat for Mudassir with some instructions. Shoaib in attacking mode at the short covers region. No ball. Third no ball delivered by Ehtisham. No ball, free hits. Now then, can Wasim take this opportunity of free hit? Score big now. This is the key moment of this match. Wasim scores a boundary of this delivery. Knocks out Al Fateh of this game. This is interesting. A big delivery coming up. Ehtisham bowling to Wasim. Free hit. Is this gonna go out of the boundary? Slow one, beautifully bowled. Wasim fails to capitalize. Dot ball. This is beautiful comeback by Ehtisham. He would not be happy about his no balls, but he'll certainly be happy about the way he's bowling.
What a match this is turning out to be. This is getting closer and closer. Short delivery, trying to pull that away, beaten completely. Dot ball is the result. Suddenly, Wasim is under pressure now. The youngster. Can he handle the pressure? Can he get his team to the finish line? Shoaib in attacking mode at the short covers region. Another heave. Misfield, run, chance of a run out. Still chance of a run out, still fumble. Mansoor dives. Not out is the signal. What a fumble. What a fumble. What a chance of a run out. Has Al Fateh put down the match opportunity? I'm not sure what was Shoaib doing at the covers region. He should have run towards the wicket region. Score moves on to 29 runs. 29 runs on the board for NCC. From 24-20 to 18-17. This is getting closer inch by inch, ball by ball, over by over. This match is getting closer. Al Fateh believes they can win this game. Let's not forget this golden arm of Wasim yet to be bowled. Can he do the damage? 29 runs on the board, 18 balls, 17 runs needed. 18 balls, 17 runs. Wasim, youngster under pressure, almost ran himself out in the last over. Lucky that he's still there. There was fumble by Mansoor. Lovely delivery, no white signal by the umpire. I thought Ammo had read the intentions of Mudassir, but no, it's a white ball. Mudda trying to reverse sweep. Full toss. I'll tell you what, Mudassir would have felt that he missed out on an opportunity of a boundary there. Dot ball is the result. Another good delivery, another dot ball. Ammu is an experienced campaigner. It's not going to be easy scoring against him. Now then, a full toss, another dot ball. I'll tell you what, Mudassir is missing out on golden opportunities. That was there to be hit. Misses out completely, dot ball. Slow one again, what an over. 4 dot deliveries on the trot. Lovely shot. This is running towards the boundary. Chance of a boundary. No, it's not. No, it's not. 2 runs taken. Al Fateh will be happy about that. Lovely over. This is by Ammu. Mudassir back on strike. Can he manage to get a boundary of this over, this ball? It's going to be important for MCC. Ammu to Mudassir. Reverse sweep attempt, beaten completely. Another dot ball, excellent over. Comes to an end. Score moves on to 32 runs. 3-2 on the board. From 20 to 17 and now to 14. 12 balls, 14 runs needed. What a comeback this is by Al Fateh. रेंजर्स और वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश है कि डैश की तरफ टॉस के लिए आ जाएं. अगली मैच रेंजर्स और वॉरियर्स के बीच में.
14 रनों की जरूरत 12 गेंदों में। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला। वसीम जो कभी नहीं हार मानते, इस मैच में भी अपनी टीम को पूरे जज्बे के साथ इस गेम में वापस लेकर आ गए हैं। 12 बॉल 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है यंगस्टर और यंगस्टर्स के बीच में। वसीम बैटिंग की जिम्मेदारी एमसीसी के लिए, सुफियान बॉलिंग की जिम्मेदारी अल फतेह के लिए। दोनों को अपनी टीम को जीत के उस पार करना है। देखते हैं कौन कामयाब होता है इस यंगस्टर्स के बैटल में। दो यंगस्टर्स की जंग, सुफियान और वसीम। पहली गेंद, शॉर्ट बॉल, आराम से वसीम ने इसको बाउंड्री पर खेल दिया। 6 रन। What a delivery to bowl when you need 12 balls, 14 runs. In the battle of youngsters, Wasim is ahead now. Another short one. Wasim says thank you. Wasim says thank you. 2 ball it took. दर्शक अभी भी सोच रहे हैं क्या ये शुएब के कदम जीत के पास लेकर गए या जीत से दूर कर गए अल फतेह को। काफी शानदार बैटिंग का मुजाहिरा इधर पर। वसीम की बल्लेबाजी, काफी शानदार बल्लेबाजी। इसी के साथ स्कोर्स बराबरी पर। बहुत ही अच्छी शॉट, सिंगल लेने में कामयाब, और इसी के साथ एमसीसी जीतते हुए ये मुकाबला। Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Soon on Amazon, Flipkart and Meesho.
Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. Daughters Fashion, the online store, coming soon on Amazon, Flipkart and Meesho. मामा अपना पूरा तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए Mama Mohsin can be on fire. He can be on fire. Lovely delivery. What a delivery. What a delivery that was. Moving away, beaten completely. Dot ball is the result. Faizan didn't have a clue about that. Mama is on fire. What an over this is. What a beginning this is for Rangers. Faizan back on strike, facing Mama. Lovely delivery, looking for a quick single. This could have been dangerous. Had it been a clean pick, it could have been dangerous for Nadeem. 1 run completed, a cheeky single. All right, so we will have Nadeem. Nadeem facing Mama for the first time. Experience versus experience now. Lovely delivery, equally well played. What a good shot, keeps it down for a single. Mohsin bowling to Faizan. Another good one, equally well played, nicely fielded. That's the end of the over. What an over by Mama. Score moves on to 4 runs. 4 runs at the end of the first over. Lovely bowling. Four runs on the board for Warriors. It is gonna be Wasim with the ball in hands, change in the field.
Short cover. Lovely shot, beautiful shot. Nadeem with all his experience knows where exactly the gaps are. Plays this lovely lofted cover drive for a couple of runs. Nadeem is looking in good touch. This is not good signs for Rangers. Short ball pulled away. Sadiq attacks the ball, keeps it down for a single. Faizan back on strike, will face Wasim for the first time. Slow one this time, straight into Asif's hand, puts it down. The lucky mascot Asif. Lucky mascot Asif puts it down. It is now going to be Nadeem on strike. Wasim almost got the wicket of Faizan. Reverse sweep attempt. Oh, will tell you what, that was very, very close for a stumping chance. Nadeem fumbles. Looks like he's done some damage to his leg. He slipped, but Naveed could not capitalize on that opportunity. Missed a stumping chance. 2 balls, 2 chances gone down. Another slow one in the air, Is this going to be taken? Yes, it is. That's the first strike for Rangers. Nagraj bowling, Nagraj facing Wasim, gets a single. Score moves on to 9 runs. Lovely start by Rangers. 9 runs on the board. Nagraj and Faizan at the center for Warriors. एमसीसी के बैट्समैन वसीम अगर ग्राउंड पर हैं तो डायस पर आ जाएं अपनी मैन ऑफ द मैच कलेक्ट करने के लिए. एमसीसी के वसीम. Lovely delivery. This is by Shahbaz. Huge appeal and Mujahid decides that's out. Mujahid, the umpire, signals out. Nagraj doesn't believe that he's hit that ball, having some questions with the umpire, but both the umpires are convinced that he's out. That's a big wicket. Big wicket for Rangers. What a delivery that was by Shahbaz. Gets the key batsman Nagraj. Short delivery cut away straight into the hands. Put down Tawseef. Put down. 3 chances so far by Rangers. 3
Shahbaz will now bowl to Zahid. This is good bowling by Shahbaz so far. Managed to get 2 wickets. An important wicket of Nagraj. Nagraj is back into the pavilion. Zahid on strike. In the air! I'll tell you what, that was so close. So close. Zahid could have been sent back to the pavilion. Lucky that the ball popped over the head of Tawseef. Faizan back on strike. Will face Shahbaz. Lovely delivery, equally well played. Gets a quick single. Shahbaz has looked like picking up wicket on every single delivery of this over. Score moves on to 11 runs on the board. 3 overs completed. 11 runs on the board. What a bowling performance this is by Rangers. It has to be this pair who has to get Warriors out of the trouble. Zahid is quite capable of doing it. Faizan has shown some decent form in this tournament. Can they get the team back on track? This has been decent bowling performance by Rangers. They get their strike bowler back into the attack. Mohsin, who is commonly known as Mama, wants to ensure that he's got the right fielders at the right spot. Lovely delivery, looking for a quick single, chance of a run out, but lucky mascot Asif. By the time he picks up the ball, batsman completes the single. काफी फैन फॉलोइंग इधर आसिफ की. दर्शकों की मांग, हर गेंद आसिफ के हाथ में चाहिए. नद्दू को बॉलिंग कराएं, दर्शकों की मांग. काफी फैन फॉलोइंग इधर देखने को मिल रही है नदीम और आसिफ की. बहुत ही अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर. अटैकिंग नद्दू स्लिप में. फिर से एक बार ऑफ स्टंप की तरफ गेंद. जाहिद बिना कोई छेड़खानी करते हुए गेंद को जाने दिया. दर्शकों की मांग, नदीम से गेंदबाजी करवाएं. फिर से एक बार मामा की गेंद, थोड़ी सी हवा में गेंद, पर कोई नुकसान नहीं. जाहिद सिंगल लेने में कामयाब. फैजान स्ट्राइक पर. जब तक जाहिद सेंटर पर हैं, वॉरियर्स एक भरोसे के साथ, सारी जिम्मेदारी वॉरियर्स की. फिर से एक बार मामा शॉर्ट गेंद करते हुए फैजान ने इसको पुल कर दिया. 2 रन लेने की कोशिश. फील्डर बॉल उठाने में चूके, कोई नुकसान नहीं. 1 रन लेने में कामयाब. फिर से एक बार जाहिद स्ट्राइक पर. 2 बाला, 2 गेंदा और इस ओवर की. जाहिद स्ट्राइक पर.
सामना करेंगे मोहसिन का। फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, मोहसिन का प्लान पूरा ऑफ साइड खिलाने की कोशिश जाहिद को। जाहिद बिना कोई छेड़खानी करते हुए इस गेंद को जाने दिया। फिर से एक बार मोहसिन बॉलिंग करेंगे जाहिद को। काफी सुंदर शॉट, फुल टॉस गेंद थी, जाहिद इसका फायदा उठाने से चूके सिंगल लेने में कामयाब। आखिरी गेंद इस ओवर की, सामना करेंगे फैजान मोहसिन। काफी अच्छी गेंद हवा में, नद्दू से गेंद चूकी है और स्टंप्स को तोड़ना चाहते थे। नद्दू थ्रो में स्टंप्स को तोड़ना चाहते थे। एक तो कैच छोड़ा और उस पर से रन दे दिया। नदीम की अंगारा फील्डिंग, 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति। अंगारा नदीम की अंगारा फील्डिंग। दर्शकों की मांग, नदीम से गेंदबाजी। स्कोर पहुंचा 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। 4 ओवर की समाप्ति, 18 रन। जब तक जाहिद हैं सेंटर पर, रेंजर्स को रिलैक्स करने का मौका नहीं। सारी जिम्मेदारी वॉरियर्स की जाहिद के खांधों पर। देखना है जाहिद अपने बल्ले से क्या मैजिक दिखा सकते हैं। शाबाश, फैजान को काफी अच्छी शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, सिंगल लेने में कामयाब। अंगारा नद्दू के पास बॉल। अंगारा नद्दू पिछली गेंद अगर स्टंप्स पर लगती तो स्टंप्स से अंगार निकलते। फिर से एक बार जाहिद सामना करेंगे शाहबाज का, जो शानदार बॉलिंग करते हुए अभी तक स्लोअर गेंद, बहुत ही चालबाजी की गेंदबाजी होते हुए इधर पर पूरी तरह से चूके जाहिद। अंगारा नद्दू स्लिप में। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी बल्लेबाजी, बाहरी किनारा बैट का, सिंगल लेने में कामयाब। अंपायर्स हैं उधर पर मामा। बैट, अंपायर्स का इशारा, बल्ले से निकलता हुआ गेंद, 1 रन लेने में कामयाब। शाबाज, इस बार गेंदबाजी करेंगे फैजान को। फिर से एक बार स्लोअर गेंद उड़ाकर मार चुके हैं फील्डर सादिक। शाबाज, विकेट लेने में कामयाब रेंजर्स के लिए। फैजान, जिन्होंने पिछले ओवर में मौका मिला था, पूरी तरह से फायदा उठाने में चूके। नद्दू अंगारा ने क्या छोड़ी थी उनकी। कप्तान इस्माइल बैटिंग की ओर से अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी लेंगे। जाहिद नॉन स्ट्राइक पर। शाहबाज की शानदार गेंदबाजी। अभी तक इस टूर्नामेंट के काफी अच्छे बॉलर साबित हुए हैं शाहबाज।
काफी अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरह से खेल दिया इस्माइल ने, आराम से सिंगल लेने में कामयाब। जब तक सादिक हैं, आसिफ को जाने की जरूरत भी नहीं है उधर पर। सादिक आसिफ को समेट कर फील्डिंग कर सकते हैं। एक तरफ से आसिफ और दूसरी तरफ से नदीम, दोनों ऑफ साइड की फील्डिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए रेंजर्स के लिए। फिर से एक बार जाहिद घुमा कर मारना चाहते थे, फिर से बाहरी किनारा, सिंगल लेने में कामयाब। इस्माइल सामना करेंगे अब शाहबाज का। मुझे ओवर 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 एंड ऑफ द ओवर। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन्स, बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन्स। 5 ओवर की समाप्ति, 22 रन बोर्ड पर। जरूरी चीज यह है कि जाहिद अभी तक सेंटर पर। जाहिद जब तक हैं, रेंजर्स रिलैक्स नहीं कर सकते। एक ओवर में 3 से 4 बाउंड्री की कैपेबिलिटी रखते हैं जाहिद। गोल्डन आर्म वसीम बॉलिंग करेंगे जाहिद को। रिवर्स स्वीप, काफी दिलचस्प चॉइस जाहिद की, जबकि बाउंड्री इधर शॉट है। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हुए पूरी तरह से चूके डॉट बॉल। फिर से एक बार उछाल कर मार दिया है हवा में गेंद। आसिफ कैच लेने में कामयाब। इसी के साथ जाहिद पवेलियन वापस। मुझे नहीं लगता वसीम को भी भरोसा था कि आसिफ वो कैच लेने में कामयाब होंगे, लेकिन आसिफ लकी मैस्कॉट है रेंजर्स के लिए। अंगारा नद्दू अंगारा थ्रो करके कैच छोड़कर खुश दिखाई देते हुए फील्ड पर। गोल्डन आर्म वसीम लगता है डर गए जब मुदस्सिर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे। काफी दिलचस्प मुकाबला ये वसीम और मुदस्सिर के बीच में। रिवर्स स्वीप, मुद्दा रिवर्स स्वीप खेलते हुए जैसे ही मुदस्सिर रिवर्स स्वीप फिरते हैं, वसीम फुल टॉस ही डालते हैं, दूसरी कोई गेंद नहीं डालते। काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर वसीम और मुदस्सिर के बीच में। क्या मुदस्सिर इस बार वसीम को छक्का मारने में कामयाब होंगे? क्या वसीम मुदस्सिर की विकेट लेंगे? देखना होगा। दर्शकों की मांग, वसीम के 4 बॉल में 4 छक्के। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चूके मुदस्सिर, डॉट बॉल। फिर से एक बार उठाकर खेल दिए हैं स्पीड सादिक, कैच लेने में कामयाब। नद्दू अंगारा जो खुद कैच छोड़कर दूसरों की कैच सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि नद्दू अंगारा को दूसरे कैचले में ज्यादा खुशी मालूम होती है। खुद तो कैच लेते नहीं, लेकिन दूसरे जब कैच लेते हैं तो काफी खुश नजर आते हैं नद्दू अंगारा। फिर से एक बार गोल्डन आर्म वसीम, काफी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन मार्शल स्ट्राइक पर आते ही पुल शॉट सिंगल, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 25 ऑन द बोर्ड। 6 ओवर की समाप्ति, 25 रन। हेलो, वालेकुम सलाम। तुम्हें ये पफ की ये है नहीं, वहाँ वो साइड रखो। 25 वो साइड वो 3 ड्रायर में से ध्यान चेक जगह, वो 3 शेल्फा में से एक शेल्फ में है वो दवाएं आएंगे ट्रे में दो दो। वो जगह है सर, वो जगह रखो वहाँ नहीं है। अगर को बोलेगा तो मेरे टेबल के ड्रॉ में देखो, वहाँ भी नहीं है। अगर को बोलेगा तो वो इसके ड्रॉ में देखो मेरे, लेकिन वहाँ 600 वो पफ वो दवाएं की ट्रे की जगह 600। मार्शल सिंगल लेने में कामयाब, इस्माइल को स्ट्राइक। लकी मैस्कॉट आसिफ कैच तो ले लिए, लेकिन फील्डिंग करने से चूक गए इस बार। शुएब पता नहीं आसिफ के दोस्त हैं या दुश्मन, काफी तारीफ कर रहे हैं यहां पर। और सादिक विकेट लेने में कामयाब। अंगारा नद्दू का सेलिब्रेशन इधर पर, अंगारा नद्दू इसी के साथ काफी डेंजरस बल्लेबाज कैडिक, काफी डेंजरस बल्लेबाज कैडिक आते हुए पहली गेंद दी जंतर बहाल को मारने की काबिलियत इनमें। रिवर्स स्पेशलिस्ट, ईस्ट की बाउंड्री इनको बहुत छोटी लगेगी। ये देखिए बाहरी किनारे से कितनी दूर तक पहुंचा चुके हैं गेंद को। अगर बल्ले के बीच में लगती तो बाहर, स्टेडियम के बाहर से गेंद को लाना पड़ता। इसी के साथ सादिक बॉलिंग करेंगे तजुर्बेकार मार्शल को। स्लोअर गेंद, काफी अच्छी शॉट सीधे हाथों में। इसी के साथ सादिक फिर से एक बार विकेट लेने में कामयाब। काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा रेंजर्स की तरफ से। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन्स, 7 ओवर की समाप्ति, 27 रन्स ऑन द बोर्ड। डेंजरस कैडिक ऑन स्ट्राइक। क्या ये 6 बॉल में 6 छक्के मार सकते हैं?
लास्ट ओवर, लास्ट मैन, रिवर्स स्वीप स्पेशलिस्ट। एक जमाना इनको बंडा स्वास्तिक के नाम से जाना जाता था, जिस शानदार तरीके से ये रिवर्स स्वीप खेलते थे। क्या ये रिवर्स स्वीप फिर से दिखाएंगे? दर्शक काफी दिलचस्प नजर कैडिक के ऊपर, सारी ग्राउंड की नजरें कैडिक के ऊपर। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इधर पर। पहली गेंद रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप अगर बल्ले के बीच में जाती, ईस्ट रेलवे स्टेशन से गेंद लेकर आना पड़ता था। फिर से एक बार कैडिक सामना करेंगे, फिर से एक बार रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप मैं बोला था, ईस्ट के रेलवे स्टेशन दो। रिवर्स स्वीप स्पेशलिस्ट मिस्टर कैडिक। मैं उजैर से गुजारिश करूंगा पुराने गेंद तैयार रखें। रिवर्स स्वीप स्पेशलिस्ट है इधर पर, 4 गेंद गमने की पूरी पॉसिबिलिटी। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप, पूरी तरह से चुके नद्दू अंगारा फील्डिंग करते हुए। दर्शक की नजर तरस रही है रिवर्स स्वीप कैडिक के बल्ले से छक्के के लिए। फिर से एक बार कैडिक सामना करेंगे, क्या ये फिर से एक बार रिवर्स स्वीप ट्राई करेंगे? फिर से एक बार बल्ला जोर से घूम आया, लेकिन कोई रन नहीं, डॉट बॉल। वसीम जो इधर डीप पॉइंट पर खड़े हुए काफी डर रहे हैं, जिस तरह से कैडिक बल्ले को घुमा रहे हैं, जिस तेजी से गेंद आएगी। फिर से एक बार, फिर से एक बार रिवर्स स्वीप, फिर से एक बार थोड़ी फासले से चूके। वसीम को अभी भी डर लग रहा है इधर पर, हेलमेट मंगा सकते हैं। इस बार सीधी बल्ले से शॉट खेलते हुए 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन ऑन द बोर्ड। अंगारा चैलेंज, 30 रन काफी मुश्किल हो सकता है नद्दू, ये क्रिकेट है।
Ismail will bowl to Tausif. Lovely shot, beautiful shot, gets a single. That was in the air for a little while. No damage done. Tausif is off the mark. Farooq back on strike. Ismail, decent job with the ball so far. It does look like Warriors believe they have match on the hands. They believe they can win. They are ensuring that the fielders are in right place. Can they strike? Can they strike early? Can they make this match interesting? Short delivery, trying to cut the down. No bat. Beaten completely. Dot ball is the result. Beautiful over so far. Few more overs like this. Rangers are in trouble. Is that an edge? Yes, it is. Ismail strikes. Second wicket. Second wicket of the over. Farooq departs. I'll tell you what. Slowly but surely, Warriors are sneaking in. They do believe they can win this match. 2 strikes in the first over. Is there nervous energy now with Rangers? 2 wickets down. That is exactly what Warriors would have wanted in this small target chase. They do want early strikes. They have managed to get it in the first over. Ismail has managed to get it for them. Can he strike again? The captain of Warriors. Can he strike again? Can he make this more interesting? Can he strike again? Is the question. All right, Ismail to Tausif. I'll tell you what, that was close, beaten completely, wrapped on the pads. That's the end of an excellent over. Score moves on to 3 runs. 3 runs on the board. It will be Tausif on strike now. Facing Mudassir. Mudassir will bowl to Tausif. Lovely delivery, wrapped on the pads. What a beautiful delivery. Mudassir is looking in some decent form with the ball in hands. There's certainly energy in the field. Warriors believe that they have this match in their hands. Can they pull this off? Can Warriors pull this off? Lovely delivery in the air. That's another wicket. That is another wicket. 3rd wicket down. Third wicket down for Rangers. Rangers are looking in trouble at the moment. 3 wickets down.
Warriors believe they have match in their hands. They have only 31 runs to play with. Dangerous hitter, Wasim. I'll tell you what, if he stays for a couple of overs, he's gonna finish this match for Rangers in a short time. Wasim is quite capable. We all know how he can deliver boundaries. When DJ Wasim was bowling, Mudassir got out to him. Can Mudassir take the revenge back? Can Mudassir strike? Three runs on the board, 3 wickets down. 3 runs, 3 wickets. There's buzz, there's energy on the field. Mudassir bowling to Wasim. Lovely delivery, equally well played, running towards the boundary. This is what he's capable of. 4 runs. All Rangers need is Wasim to stay for 10 deliveries and he'll finish the game. 10 deliveries is what Wasim needs to finish this game. Audience are a little bit disappointed with Wasim that he's not shown the same form in phase 1 of this tournament. Lovely delivery. I'm not sure what exactly Wasim was trying to do. That was a blind sweep shot, beaten completely. Dot ball is the result. He's a pretty good player when he hits the straight. Lovely shot. This is definitely not sensible bowling. You cannot bowl to Wasim full tosses, especially when you have long on and long off inside the circle. This is definitely interesting field set for Wasim. They have invited Wasim to hit in his strength areas. Wasim has managed to pull 2 boundaries now. He's slowly taking this match out of Warriors' hands now. 10 balls, Wasim stays. He's gonna finish this match, get this wicket or lose this match is the ask for Warriors. Lovely shot over the covers region, 4 runs. Doesn't take too much of time, does he? What a strike, 3 balls, 3 boundaries. Score moves on to 15 runs on the board. 15 runs, 1-5. 16 correction.
Lovely shot, looking again for a quick single. This can be dangerous. Another fumble. Another run out chance goes for a bagging. Wasim back on strike. Will be facing Nagraj. In the air, and that's it. That's the shadow, that's the curtains for Wasim's innings. Nagraj manages to strike. Mama coming to the center, famously known as Do Mara. Ek maar. Ek maar is what Rangers will be happy with if he manages to do it. Dangerous Mama. दर्शकों की मांग, अंगारा नद्दू से बैटिंग करवाएं. बढ़ता हुआ स्कोर 18 runs on the board. अजहर आमिर आगो टास्क जपले की अजहर शाइनिंग बॉयज के कप्तान अजहर. मामा बैटिंग पर आते हुए पहली ही गेंद पर एक मार का नजारा दिखाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूके उस एक मार में रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे. काफी सुंदर शॉट, कवर्स की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन मिड विकेट रीजन पर सिंगल लेने में कामयाब. That's the end of the over. Score पहुंचा 19. अजहर ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಜರ್. ಕೊಂಚ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟೆ வந்துருங்க ಅಜರ್. दर्शकों की मांग, मामा स्ट्राइक पर एक मार से जाने जाते हैं मामा. क्या वो एक मार का नजारा दिखाएंगे? दर्शकों की नजर मामा पर. काफी चहीते मामा दर्शकों के, बहुत सारे फैंस हैं मामा के. मोहसिन, क्या वो एक मार का नजारा दिखाएंगे? इस्माइल जो काफी शानदार बॉलिंग किए थे पहले ओवर में, बॉलिंग करेंगे खतरनाक मामा को. खतरनाक मामा. खतरनाक मामा जो एक मार के नाम से जाने जाते हैं, उस एक मार के मूड में नहीं है अभी. काफी शानदार ड्राइव खेलते हुए सिंगल लेने में कामयाब. क्लासिकल ड्राइव. तौसीफ फिर से एक बार स्ट्राइक पर, जो अब तक सेंसिबल इनिंग्स खेले हैं रेंजर्स के लिए. सामना करेंगे इस्माइल का. Next match toss is won by Azhar Shining Boys, and Shining Boys will field first. This is good sensible batting by Tausif and Mohsin. For the first time, Mohsin is looking sensible. He is playing singles rather than chewing up balls by looking for boundaries.
This is good, sensible cricket by Rangers now. Lovely shot, beautiful shot. This is a surprise for the audience as well. Mohsin is looking for gaps, looking for singles. He is known for ek maar mama. काफी खूबसूरत स्क्वायर कट खेलते हुए लेट कट सिंगल लेने में कामयाब. जब तक कैडिक बॉल उठाते मामा सिंगल लेने में कामयाब. मामा का एक मार, दर्शकों की मांग एक मार. मामा व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. दर्शकों की मांग एक मार, लेकिन मामा कोई मूड में नहीं इस एक मार के. काफी जिम्मेदारी, पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले चुके हैं मामा. लगता है मैच फिनिश करके जाना चाहते हैं. रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके. एक मार मामा की झलक दिखती हुई फिर से एक बार. फिर से एक बार बॉलिंग करेंगे इस्माइल मोहसिन को. फुल टॉस गेंद काफी नजदीक थी मार्शल के हाथों में. काफी शानदार रनिंग इधर पर, काफी शानदार रनिंग. 2 रन लेने में कामयाब. तीसरे रन के लिए मामा दौड़ते हुए, लेकिन मामा जो हिरन की तरह दौड़ रहे हैं, तौसीफ उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते. विकेटों की बीच में हिरनों की दौड़. मामा हिरन की तरह रन कंप्लीट कर चुके हैं. 26 runs on the board. 26 रन. चौबीस गेंदों में 5 रन की जरूरत. चौबीस गेंदों में 5 रन की जरूरत. नद्दू को बैटिंग के लिए नहीं भेजा रेंजर्स ने. पिंच हिटर नद्दू को अभी भी पवेलियन में ही रखे हैं, डगआउट में ही रखे हैं, बैटिंग को नहीं भेजे हैं. फुल टॉस गेंद. ऐसा लग रहा है कि वॉरियर्स को जल्दी है इस मैच फिनिश करने में. पिंच हिटर नद्दू अभी भी डगआउट में बैठे हुए हैं, बैटिंग को नहीं भेजा पिंच हिटर नद्दू को. अंगारी या अंगारा नद्दू अभी भी डगआउट में. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. इनका नाम अंगारा नद्दू है, फील्ड पर चिंगारा है. नांगारा न यहाँ पर आसिफ को धरना होते हुए आउट.
इनका नाम अंगारा नद्दू है, लेकिन बैटिंग में सिर्फ चिंगारी निकलती है। देखना है बॉलर की क्या स्ट्रैटेजी होगी। लगता है नदीम के बल्ले पर ही नहीं डालेंगे ये गेंद। भाई मुंह पोगी मार डालता इस्माइल। ओए अंगारा नद्दू की बल्ले से चिंगारा रन।
Sponsored by Purvika, Pink Gold, World Gym, Hamantun.com, Bflix Channel, Shore Waves, Zishan Kebab Center. Supported by M. Ishtiaq Ahmed. A very important match for Aksa cricketers. This could well decide their fate for the semi-final spot. Taking longer than usual. Finally, the hurdle's over. Requesting Aksa cricketers to please send in their batsmen. Requesting Aksa cricketers to please send in their batsmen. The two batsmen out in the center for Aksa cricketers, Amir and Abrar. To take strike for Aksa cricketers is their captain Amir. With the ball in hand for SBCC is Rahil. Das, Musu and Afridi, three fielders outside the circle. Amir taking strike. Over the wicket, Rahil bowling to Amir. Hits it down the ground. Threes come into the picture. Goes all the way. Excellent start from the captain. Goes for six all the way. Excellent start from Amir. Putting Rahil under pressure from ball one. Amir facing Rahil. Tries to go down the ground to Wahib. Dot ball. Good comeback from Rahil. Rahil
bowling to Amir. Dot ball again. Excellent comeback from Rahil after being hit for a 6 on the very first ball. Rahil over the streaks, bowling to Amir. In the air. Fielders coming in, settling down. Falls in no man's land. Luck favoring the brave. Oh! Close run there. Brings Abrar on strike. Will be facing Rahil. Rahil over the streaks, bowling to Abrar. Nudges it, runs the first one hard. Excellent running. Sensible batting from Abrar. Amir facing Rahil. Goes down the ground. Trees coming in the picture. 2 runs taken easily. Excellent batting from Amir. Great start from Aksa cricketers. After the completion of over number 1, score moves on to 10 runs. Taking the responsibility with the ball is the youngster Afridi. He will be bowling to Abrar. Aksa have got a great start ahead. Afridi bowling over the streaks to Abrar. Reverse sweep, caught. Excellent catch by the keeper, the captain himself. Abrar departs. A very crucial wicket in the form of Abrar. Replacing Abrar comes the dangerous Tanzim. Afridi providing the big throw. Tanzim on strike. Afridi over the streaks, bowling to Tanzim. Tries to high gate, misses, dot ball. Excellent start from Afridi.
Tanzim on strike. Hits it. Square leg coming into the picture. Only a single. Brings back Amer on strike. Amer was pretty good in the previous over. Can he replicate the same? But this time it's different. It's Afridi who is against him now. Amer on strike will be facing Afridi. Completely beaten for the pace. Excellent bowling from Afridi. Getting the momentum back in SBCC's favor. White ball signaled by the umpire. Tall man Amer on strike. Facing young talent Afridi. Is an excellent all-rounder. Young man has the capability to both ball and bat. Goes back foot twice for a big one. Gets some bat on the ball. Towards the short mid-wicket. Gets an easy single. One more ball to go in this over. Left-handed Tanzim on strike. Goes for a big one. Gets some bat on the ball. Fumble from the fielder at the square leg. 1 run to end the over. 2 overs gone. 14 runs on the board for the loss of 1 wicket. फिरो बैटिंग को आओ। Harris, who was the man of the match in the last match for SBCC, did the brilliant job both with bat and ball. Comes to ball, over number 3, the last over of the power play. Left-handed Tanzim on strike. Lovely delivery, perfect line, perfect length. No chance for the batsman to swing his arms. Dot delivery straight into the hands of the keeper. 3 men down on the leg side boundary. A deep square leg, a deep mid wicket and deep mid on. Here comes Harris once again over the wicket to the left-hander. Full toss delivery this time. Whacked away by the left-hander for 6 runs. Though it did not middle the bat, but good enough for getting 6 runs for Aksa cricketers. Tanzim once again on strike, facing Harris. Short delivery this time, wide given by the square leg umpire. Way above the height of the batsman. Requests the keeper not to question the umpires. Excellent comeback from Harris, but it was woe over the head of the batsman, resulting in a wide. Thus they're having a word with the bowler. B2PL season 6. Coming into the last stages of the league matches. Here comes Harris. Shuffles across. Beautiful play towards the mid wicket. Fielded down straight to Musawir. Easy single taken. Excellent batting from Tanzim. Last stages of the league matches.
Every single team still has a chance to qualify for the semi-finals. As Harris takes the ball once again. Lovely delivery, cleans him up. Palmer departs. Yorker delivery, no chance for the batsman. The captain of Aksa Cricketers goes back to the dugout. Second wicket down here for Aksa Cricketers. Moss walks out to the center to replace the captain of Aksa Cricketers. Harris bowling over the sticks to the right-hander. Lovely drive straight to the fielder. Fumble there from Mohsin, resulting in a single for Aksa Cricketers. That brings the left-hander back on strike. Here comes Harris to the left-handed Tanzim. Shuffles across, plays beautifully towards the short mid-off. Rahil does well. Dot delivery to end the power play overs. 3 overs gone and the score moves on to 23 runs on the board for Aksa Cricketers, with both the openers back to the dugout. Who's it going to be to ball over number 4? The man on strike is a very good batting talent. He has the ability to clear the boundary with ease. Lot of discussion there between SBCC. Looks like it's going to be Rahil to ball over number 4 for SBCC. Rahil, who was expensive in his first over. Maz on strike. 23 runs on the board for Aksa Cricketers. 3 overs gone. A very good start with the bat. Can they capitalize and put up a big total on the board? Rahil bowling over the stakes to right-handed Maz. Lovely delivery, good shot, good cricket all round. Fielder comes in, Afridi cuts it off for an easy single. Lot of field changes there for the left-hander. 4-man down on the boundary. Deep square leg, deep mid-wicket. Here comes Rahil. White signal by the umpire. Way away from the wide offside line. Aksa Cricketers have a very good start with the bat. Can SBCC come back into the game? Here comes Rahil. Tries for a big hit, beaten straight to the keeper. Dot delivery. Wahib there, just sludging with the batsman. Wahib is another left-hander. Here comes Rahil bowling around the stakes to the left-hander. Shuffles across. Short delivery, trying to cut, beaten straight to the keeper. Another dot delivery. Wahib still sledging there with the left-hander, building some pressure on him.
On the other hand, young Maz advising Tanzim to be sensible enough. Maybe if he cannot clear the boundary, try to rotate the strike instead of dot deliveries. Here comes Rahil. Tries for a big hit, beaten, excellent bowler. So far, fumble from the keeper. Maz wanted a bye. Left-hander Tanzim nowhere interested. Here comes Rahil. Shuffles across, tries for a big one, in the air. Afridi coming under it. Oh, just puts it down and scores a goal with a boundary. Afridi putting it down. One more ball to go in the server. Not sure what was Das doing there. Down on the deep mid-wicket boundary. Here comes Rahil. Shuffles across, goes for a big one. In the air once again. Trees come into the picture. One bounce. Oh, Musawir does an excellent job on the boundary. Certainly safe. 2 runs for his team. That brings the end of over number 4. And the score moves on to 31 runs on the board after the completion of 4 overs. बोलते हैं मुझे मालूम तुम ना मालूम तमिल में तुम कदी 20 साल में गुजरात में Young Afridi with the ball. Young Moss on strike with the bat. This should be a good contest. Trying to go for a sweep. Question asked by the keeper. White ball signal by the umpire. What was the captain of SBCC asking the question to the umpire? Lovely cover drive there, straight to Mohsin. He fumbles, easy run taken. Excellent cricketing stroke there from the bat of Maz. That brings the left-hander back on strike. Is he going to smash this ball out of the ground? As 4 men down on the boundary. Afridi bowling over the stakes to the right, left-handed Tanzim. Shuffles across. Oh, beautiful, connected. Connected dot right from the middle of the bat. Smashed that one out of the ground. What is Wahib still sledging? Is that not the answer for your sledging? What a shot. Right from the middle of the bat. Way outside the ground for a 6. Excellent shot there from Tanzim. Tell you what, this left-hander has very strong arms, can smash the ball all the parts of the ground. Tanzim once again on strike, facing Afridi.
Shuffles across once again, delicately played. Hanif there collecting the ball. Easy run taken, sensible cricket from Tanzim. Shuffles across, drifting down the leg side, should be a wide, and it is. Two man on the offside, inside the circle for right-handed Mas. Here comes Afridi, shuffles across, tries to play a big sweep, beaten. Wide signal by the umpire. The captain is not happy. Doesn't matter. Oh, chance of a run out. No, says the umpire. This is good cricket from Tanzim and Mas. Request the captain and the players to not question the umpires. Umpire's decision are the final ones. Wide given. A run in the form of an overthrow. 2 runs added to the total of Aksa cricketers. Lot of questions being asked. Request Das and the team not to question the umpires. There is no third umpire. The on-field umpire decision is the final one. Request the captain to please continue with the match. The captain of SBCC. Three more balls to go in this over. Left-handed Tanzim back on strike with the overthrow run. Here comes Afridi. Shuffles across, tries to go for a big one. Beaten. Dot delivery. Good delivery from Afridi. Short delivery played into the gap. Wahib, the man who was sledging, was not even sure the ball was traveling in his area. Single taken that bring back Mars on strike. Lot of field changes there for the right-handed. Wahib goes back to the deep mid-wicket. Here comes Afridi. Mars shuffles across. In fact, to switch it. Beaten, dot delivery to finish over number 5. And the score moves on to 45 runs. In fact, 44 runs on the board. 5 overs gone. 44 runs on the board for the loss of 2 wickets. These two youngsters have put up a very good partnership.
Tanzim on strike. New bowler for SBCC into the attack. Musawir to ball over number 6. They still have good bowling options. Mohsin, Anis, and Hanif can round his arm as well. At the moment, Aqsa cricketers on top of the game. Courtesy splendid batting from these two youngsters. Here comes Musawir. Wide there. Here comes Musawir. Lovely delivery, beats the batsman completely. Tanzim trying to heat it away. Beaten. Maz asking him to be sensible enough. 4-man down on the leg side boundary. Here comes Musawir. Goes for a big one in the air. Rahil with his one hand. Fumbles, takes on the second attempt to send Tanzim back to the dugout. Third wicket down for Aqsa cricketers. Left-handed Tanzim has been replaced by right-handed Shoaib. Shoaib on strike, facing Musawir, bowling around the sticks to the right-hander. Here comes Musawir. Lovely cover drive there. Straight to Rahil, gets off the mark with the single. Shoaib. That brings Maz back on strike. Here comes Maz. Oh, lovely shot. One bounce. Mohsin fumbles. In fact, misfields. 4 runs. Excellent shot there from Maz. Two more balls to go in this over. Here comes Musawir. Short delivery, Mas trying to pull. Beaten, straight to keeper Das. He fumbles, doesn't matter. Dot delivery. Any score for SBCC would be a challenge because they have a very strong batting lineup in terms of Das, Afridi, Anis, Rahil, Wahib, the captain himself. Here comes Musawir. Tries to go for a big one in the air. In fact, edge of the bat. Keeper Das putting it down. Shoaib wants a second. Chance of a run out. Das decides not to go. Six overs gone. 51 runs on the board. Another 2 important overs to go in this innings.
तुम्हारा क्या है चांस है Harris to ball over number 7. Mars on strike. Comes forward, gets an inside edge, wants a single. Chance if he hits. Das decides not to go. Another dot delivery. What a shot that was from Shoaib on the covers boundary for a 6. Here comes Harris to Shoaib. Another lovely shot towards the covers fielder comes in. Wahib does well to stop the ball. Easy single taken. Oh, very bad throw. A very bad throw there from Wahib. Wahib, who was sledging few overs ago. Another heap in the air. Rahil takes a simple catch. Another wicket down for Aqsa cricketers. हमारे टीम के ओपनर फिर्रू बैट्समैन बैटिंग के लिए आए।
61 runs on the board, 7 overs gone as Mohsin takes the responsibility to bowl his last over. Bravo, the new man in at the non-striker's end. Here comes Mohsin to Sultan. Heaps away in the air. Fielder under it, takes a good catch. Sultan departs, another wicket down. Aqsa cricketers losing their momentum. Rahim walking out, looks like. 5 legal deliveries remaining. Rahim, the new man in, facing Mohsin. Oh, tries for a big hit, gets a bat on the ball. Chance at the non-striker's end. Fielder fumbles Hanif, resulting in a quick single for Aqsa cricketers. Aqsa cricketers losing the momentum in the last overs. Bravo, on strike for the first time. 4 legal deliveries remaining. Here comes Mohsin. Shuffles across, drifting down the leg side. Wide signal by the umpire. 1 extra run added to the total of Aqsa cricketers. Bro on strike at the non-striker's end. It's Pollard. Walks forward. Takes the bat on the ball in the air. Is this another wicket? Is this going? No, straight to the fielder. Another wicket down. Firu batting go. Zishan walking out to the center. What a good over this has been from Mohsin. 2 wickets and just a single. Another extra in the form of a wide. As Zishan on strike. Will this be another wicket for Mohsin? Or will Zishan try and clear the boundary? In the air, switch it. Mohsin takes a simple catch. 3rd wicket in this over. What a good over this has been from the Mohsin. फिर टीम में ही नहीं, फिर प्लेइंग 11s में ही नहीं. Imran, the new man in. Oh, what a hit! What was this guy doing in the dugout? What a shot out of the ground for big 6.
Imran once again on strike, facing Mohsin. Is this going out of the ground? Oh, tries for a big hit, big swing. Chance at the non-strike is in. Another wicket, 4 wickets in this over. Excellent over from Mohsin. Aqsa cricketers have put up 69 runs on the board. 70 runs is the target set for SBCC. फिर वो बहुत जल्दी ग्राउंड में आ गया जय
with the ball. Around the strikes, Rahim bowling to Das. Down the ground, goes for a boundary. Good start for Das. Gets his scoring on with a boundary. Rahim bowling to Das. Hits it down the ground. Trees come into the picture. Falls in no man's land. They run two. Excellent running from Afridi. Das can be really dangerous. He started off well. Two pretty good shots from Das. Can Das be the difference between the two sides? Around the streaks, Rahim to Das. Tries to hike it towards the fielder. Mas does well. Only a single. Brings Afridi on strike. Afridi very capable of clearing the boundary. Around the streaks, Rahim to Afridi. On the body. Dot ball. Afridi on strike, facing Rahim. So far, so good. Tries to hike it. Misses the leg stump. White ball signaled. Nudges it towards the long on region. Good work from the fielder. Only a single. One ball left in this over. Das really showing glimpses of his best. Das facing Rahim. On the body, dot ball. End of over number 1. Score moves on to 9 runs.
To bowl over number 2 is Mani. Subramani will be bowling to Das. Only 3 fielders allowed during the power play overs. Bravo, Maz and Shuaib, the 3 fielders outside the circle. Mani with the ball. Das on strike. Hits it a long way. Das looking really dangerous. My God, that was a hit and some. Das looking really dangerous. Pressure on the young man, Subramani. What does he have in response? Das on strike. Subramani around the streaks, bowling to Das. Hits it again. Hits it for 6. Excellent batting from start. Blistering start for SBCC. Das gets going with some excellent cricketing sixth. Das doing the damage for Aksa cricketers. SBCC will not mind it a bit. Excellent batting from Das. When he gets going, there's very little that the opposition can do. Pressure, pressure, pressure on Subramani. A few words from his bowling partner Rahim. Das on strike will be facing Subramani. A few tense faces out there for Aksa cricketers. They know how dangerous this man can be. Das on strike. Subramani over the streaks. Not out given. Excellent comeback from Mani after being hit for 2 sixes. Few words from his bowling partner Rahim. Mani bowling to Das. Hits it for another 6. Where do you put fielders? You put fielders outside the ground when he's batting like that. Excellent batting from Das. Excellent batting from Das. The size of the boundaries don't matter to him. Last ball of this over. A lot of damage done. Shuffles across, hits it in the air, goes for 6. 4 maximums in this over from Das. Excellent batting from Das.
कैसा है कहाँ हुए व्यवस्था दे भैया व्हाट्स ना टेंशन दे दी हमें बैटिंग करे इतना बोलने का थी बैट स्टॉप कर दी इनकी सुनो गुरु अबे हमारा जो पहली बार है ना पहली बार ये ओवर में रहता तो सब कुछ हो जाना था 10 मारा से क्या स्कोर है After the completion of 2 overs, score moves on to 34 runs. 34 कितना है स्कोर 30 कैसा पहले ओवर में कितना 9 25 एक सिंगल आखिरी दिन है भाई ओके ओके डन अंडरस्टूड ऐसा मार लग रहा तूने 2 ओवर में अभी मार को बढ़िया था इनका रन रेट करा भैया तुम्हारा रन रेट खराब है खम्मे अंदर आ गया क्या हुआ उनकी भी एक मैच है ना भैया उनकी भी एक फाइट हुई है Excellent start from SPCC. कौन भैया वो बॉलिंग को तंजीम को भी 2 मारता आया Excellent start from Das. Looking really dangerous. When he's batting like that, you don't want to put eyes away from him. फोन में बात कर लेता हूँ मुदा कर लेगा कुछ मुदा फोन में बात कर लेगा कुछ After that wicket, the captain of SBCC out at the center. Tanzim, the man picking the wicket. Here comes Tanzim. Lovely delivery, beats the batsman completely. Dot delivery. What a show that was from Das in the last over. 4 huge sixes. Tanzim once again to right-handed Azhar. Oh, in the air, this is another wicket. Trace in the cute pitcher. And Bravo takes a good catch to send back the captain. This is not sensible cricket from the captain of SBCC. Anis walking out to the center. Anis walking out to the center to replace the captain of SBCC. On the other hand, Aksa cricketers in a huddle. Very interesting stage of the game. Most importantly, for Aksa cricketers, Das is at the non-striker's end. Tell you what, if Das stays at the crease, any boundary is very, very easy for him to clear.
Here comes Tanzim once again to right-handed Anis. Tapped away, sensible batting. He's a very stylish batsman. Have a lovely square cut and a lovely cover drive. Anis. Aksa cricketers definitely want the wicket of Das, who's in very dangerous form. He's at the non-strikers in. Short delivery, tries for a pull. One bounce to the fielder at the short square leg. Zishan the man does well. Another dot delivery. What an over this has been from Tanzim. He is bringing back the game on to the Aksa cricketers. Anis on strike, facing Tanzim. 4-man inside the circle. Here comes Tanzim. Oh, lovely hit in the air. Is this the fielder? Yes, but finds the fielder after that lovely hit. Another wicket down. Oh boy, Tanzim have turned this match on. 3 wickets in an over. The captain of Al Fateh looking very upset here with the loss of wickets for SBCC, because winning this game for SBCC will give Al Fateh cricketers a chance to qualify for the semi-finals. Rahil walking out to the center. Three overs gone. 34 runs on the board. That over from Tanzim is so far the fantastic over of this tournament, made in 3 wickets. Who is it going to be? Is it going to be Rahim? Yes, Rahim takes the ball to ball over number 4. Most importantly for SBCC, Das will be the man on strike. Here comes Rahim, bowling around the sticks to left-handed Das, who has smashed 24 runs of Subramani's second over. Lot of field changes there from Amir. 3-man down on the leg side boundary. Here comes Rahim to Das. Oh, is he way off the ground? What a shot! Chris Gale! Chris Gale of SBCC in action. Do not bowl short, do not bowl full tosses to this man. So far, 5 sixes in this innings. Here comes Rahim to Das. Goes for another big one, gets a bat on the ball. Abrar fumbling, resulting in an easy single. That brings Rahil on strike. Rahil should play a very sensible inning here for SBCC. Make sure rotate the strike, give it back to Das, because he has the ability to do the damage. Rahil on strike. Rahim with the ball, bowling around the sticks to the right-hander. Trying for a sweep, right on the body, dot delivery. Every dot ball is like a step for Al Fateh to move out of the tournament. Here comes Rahim. Slow delivery this time, change of pace, beaten, excellent bowling. Short delivery played into the gap, 1 bounce. Bravo does excellent job.
Cuts it off. Safe certain 3 runs. That brings Dangerous Das back on strike. Is Das going to smash this one out of the ground? Or will be this Rahim's wicket? Short delivery, tapped away, watchfully played abroad as well. Stops the ball. Easy single to end the over. After the completion of 4 overs, 43 runs on the board for SBCC. 24 balls, 27 runs. Will the captain of Aqsa Cricketers bring back Tanzim? Try to take another few wickets and make a comeback into the game. Here we go. The man who took 3 wickets with a maiden over is back in attack for Aqsa Cricketers. On the other hand, the man who have hit 5 huge sixes on strike. This should be a good contest. 24 balls, another 27 runs required for SBCC. Will Das try to smash this out of the ground? Yes, he does! Wow, mighty shot! It's 106 meters long 6. Das has smashed a brilliant 6. So far, Das have hit 6 sixes in his innings. Tanzim to Das. Is this going off the ground? Lovely delivery, excellent line, excellent length. Good comeback from the bowler. Das is 45 runs not out. On strike facing Tanzim. Will this be the first 50 of this tournament? Can Das hit a few sixes? Oh, he goes for the big one. Please come into the picture. Oh, what a catch! Das have to go back. Oh boy, what a catch that was from Imran to send back Dangerous Das. One left-hander replaced by another one. Wahib, the man who was sledging with Tanzim when Tanzim was on strike with the bat. Now it's the turn of the bowler. Can he pick up the wicket? Can he send back Wahib? Can the Aqsa Cricketers come back into the game? Wahib have hit few more sixes in this tournament, but the question is, can he hit a few more now? Here comes Tanzim.
Tanzim to Wahib. Trying to cut in the edge. Is that an edge? Question asked. Everybody down to the umpire. Aqsa cricketers. Umpire Farid shakes his head and signals an all out. Oh boy, what a golden arm this has been from Tanzim. Wahib, can he smash sixes? He has the ability. Can he do it for Shining Boys? Tanzim to Wahib. Shuffles across, tries to play a big one. Beaten, dot delivery. Pressure on the batsman. Excellent bowling here from Tanzim. 19 balls, another 21 more required. Here comes Tanzim. Wise, blind hit, beaten on the body. Dot delivery to finish this excellent over. 49 runs on the board for SBCC. Aqsa cricketers in a huddle. 18 balls, 21 runs. Aqsa cricketers on a huddle as 18 balls, another 21 runs required. अल्ताफ भाई बॉल डालो वहां से. Stunned silence at the ground. Request the umpires to start the match. 18 balls, 21 more required. What a shot that was from Das. 4 sixes in an over of Subramani. Then a huge hit for Rahim. Then another big six of Tanzim. Then the luck turning away towards Aqsa cricketers. An excellent catch from Imran. Now he has the responsibility to bowl this important over. Imran, who played a brilliant six with his bat, now has the job to be done with the ball. 18 balls, another 21 runs. If this match is won by SBCC, Al Fateh Cricket Club will also have a chance to qualify for the semi-finals. Here comes Imran. Tries to switch it, beaten. Excellent stuff from the bowler. Here comes Imran. In the air. Is this a catch? Mars coming in. Oh, excellent effort there from Mars. Low down there.
that single brings. Left-handed Wahib on strike. Wahib and Imran have played a lot of cricket together. This should be a real challenge for the batsman and the bowler. Imran with the ball. Wahib, the man on strike. Around the stakes to the left-hander. Oh, lovely delivery. In fact, wide given by the umpire. Lot of advice there for the bowler. Wahib trying to smash the ball out of the ground. He has the ability to clear the ground with ease. Imran with the ball. Short delivery, trying for a big pull. Gets some bat on the ball. Gets an easy single. Good over so far here from Imran. Imran with the ball over the stakes. Short delivery pulled away. As the trace comes back into the ground. Is this the luck turning towards the Aksa cricketers? Tell you what, that should have been into the Everestator. But the tree is making it count all for SBCC. Two more balls to go. Here comes Imran. Switch it, beaten. Excellent delivery. No chance for the batsman. All happening out there at the center. Every time the ball is going in the air, Al Fateh's captain is under a lot of pressure. Rahil on strike, facing lovely shot into the gap. Deep mid-wicket fielder coming in. Cuts it off. Fumble spray from the fielder. Sultan and Tanzim. 2 runs taken. That's the end of the over. 56 runs on the board after the completion of 6 overs. 12 balls, another 14 runs. Who's it going to be to bowl this important over for Aksa cricketers, as once again they go into huddle? Subramani back in attack. Tell you what, another left-hander at the crease with the same red bat. 2 hits from him can do the game for SBCC. On the other hand, the man who was very expensive in his first over gave away 25 runs, which changed the momentum of the match.
2 dot deliveries. Good start here from Money for over number 7. 10 balls. Another 14 more runs required. Oh, another lovely delivery. No, in fact, it's wide outside. Off some signal or wide by the umpire. 13 more required of 10 deliveries. Here comes Subramani. Lovely delivery. Easy single taken. That brings the right-hander on strike. Another 12 more required of 9 deliveries. Lot of field changes there for the right-hander. Rahil on strike, facing Subramani. Short delivery with some pace on it. Beaten straight to the keeper. Pressure building on the batsman. Pressure building on the captain of Al Fateh. Every dot delivery, the heartbeat of Al Fateh captain is way higher. Rahil on strike. Another 12 runs. Here comes Subramani. Short delivery, trying to heave that one over the square leg. Get some bat on the ball. Easy single taken. Excellent comeback here from Subramani. What an over this has been. 3 runs so far. Wahib back on strike. He was sledging with Tanzim. Can he sledge with the bowler now? Can he smash this out of the ground? Here comes Subramani. Oh, lovely delivery. Excellent pace on that one. Right up on the block hole. What an excellent 7th over of this innings comes to an end. And the score moves on to 59 runs. 11 more required of the last over. Who is it going to be to bowl this over for Aksa cricketers once again as they go into an huddle? Both these batsmen in deep trouble at the moment. 6 balls, 11 runs. Looks like it's going to be Zishan, the golden arm of Aksa cricketers, to bowl this important over. 6 balls, 11 more runs required.
Rahil on strike. Facing Zishan. 6 balls. 11 more runs. Here comes Zishan with the ball. Shot delivery. Pulled away. Fielder down. Strike to the fielder. Big wicket. Rahil departs. 5 balls. 11 more runs. As Harris walking out to the center to replace Rahil. The BP level of the Al Fateh captain needs to be checked at the moment. Harris, he is a man in good form with the bat for SBCC. He was the man of the match in his last match for SBCC. Now has the job. 5 balls, 11 more runs. Definitely a boundary is required of this delivery. Here comes Zishan. Short delivery, trying to pull, beaten on the body. Pressure building on the batsman. The keeper having a word with the batsman. Four balls, 11 more runs. Harris on strike, facing Zishan. Lovely delivery, wrapped on the block hole. Chance of it, misses. Chance of a run out. Oh, in fact, an out. Oh boy, what has Imran done? What has happened is run out to the non-striker's end, bringing back the left-hander back on strike. Musawir, the new man in for SBCC. 3 balls. 3 balls, another 11 more required. Left-handed Wahib on strike. नहीं फुल लेंथ डालिया तो नहीं मारता फुल लेंथ नहीं मारता फिर शॉट डालिया तो मार डालता 3 balls 11 more runs. Here comes Zishan. Lovely shot into the gap. Rahim comes in, picks up one-handed chance, wants a 2 fumble from the fielders. Two runs counted to the SBCC account. 2 balls, 9 more required. Two balls, 9 more required. Left-handed Wahib on strike, facing Zishan. Lovely delivery. Excellent job there from Shoaib on the deep square leg boundary. One ball, 8 more required. One legal delivery is required from Zishan. भाई जरा जल्दी आओ यहाँ चलने को. हेलो भाई जरा जल्दी चलने को. ओए बच्चे पीछे आ बेटा.
Oh! Dot delivery to finish this game. What a time for SBCC. डीजे का हाल बुरा. Man of the match for this match, Tanzim from Exa Cricketers. Tanzim. Request
मुजू की ओर से 2 रन बटोर लिए, 1 रन बटोरे बैट्समैन ने। डीसीसी की ओर से फरीद गेंद करने के लिए इनाम स्ट्राइक पर, काफी बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। बेहतरीन शॉट वहां पर इनाम के बल्ले से निकलती हुई, 6 रन। मोरी की बास, इस बार हल्के हाथों से खेला, कलर वहां पर फील करते हुए डायरेक्ट हिट होता तो आउट हो सकता था। इस बार काफी अच्छी गेंद, तेज गेंद, बीट हुए तौसीफ, वहां पर कोई रन नहीं। बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार बीट हुए। इस बार हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट की जानिब पर, साउथ दौड़ते हुए कट किए, 1 रन। एक ओवर के खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा 9 रन बिना कोई नुकसान के। अगला ओवर फेंकने के लिए आए हैं डीसीसी की ओर से आरिफ, जो कि सामना करेंगे तौसीफ। काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई तंजीम की, यहां पर पीछे फैन आते हुए। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर साउथ की। इस बार इनाम स्ट्राइक पर, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरीके से। टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर तबरेज के हाथों में जा पहुंची गेंद। फिर से एक बार बीट हुए। ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಸ್ನ। इस बार घुमाकर जंतर महल में मारना चाहते थे, बैट का किनारा लगा, 1 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी अच्छी शॉट, वहां पर फील्डर से टकराई गेंद, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 12 रन 2 ओवर के बाद बिना कोई नुकसान के। अगले बॉलर डीसीसी की ओर से असलू, जो कि 2 कदम में ही गेंद फेंक देते हैं, खड़के डालते हैं ये। तौसीफ अली स्ट्राइक पर सामना करेंगे असलू का।
घुमाकर मार दिए स्क्वायर लेग की जानिब पर 6 रन। बेहतरीन शॉट वहां पर तौसीफ के बल्ले से निकलती हुई। नद्दू के मामू इज्तिमाम मिड ऑफ पर। वाइड गेंद, अंपायर वसीम करार दिए वाइड। फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइड। इजमान इस बार राइट आर्म अराउंड द विकेट, डॉट गेन। पॉप जी फिर से एक बार वाइड, वाइड पर वाइड, वाइड पर वाइड। इनकी टीम बहुत डाल रही है वाइड। इस बार काफी बेहतरीन शॉट तौसीफ के बल्ले से निकलती हुई, मगर एक ही रन मिलेगा। पब्लिक डिमांड बॉलर मुजू को दियो। फिर से एक बार बीट हुए। रिवर्सिफ इस बार इजमान के हाथों में गए और रनआउट का चांस यहां पर मिस हुआ। स्कोर 3 ओवर के खत्म होने के बाद 23 रन्स। पब्लिक डिमांड बॉलिंग मुजुगु दियो, अडीम शाब मोरी की बॉस। फिर से एक बार आरिफ को लाया गया है वहां पर गेंदबाजी के लिए डीसीसी की ओर से। 4वां ओवर फेंकेंगे आरिफ। काफी फील्ड में तब्दीली वहां पर कप्तान इस्टू के हाथों से। स्कोर 3 ओवर के खत्म होने के बाद 20 पर 3 रन। इस बार घुमाकर मारना चाहते थे, बीट हुए, सीधा पैर से टकराई गेंद। काफी अच्छी शॉट, स्क्वायर लेग की जानिब पर फील्डर दौड़ते हुए सऊद, वहां पर अच्छी फील्डिंग, रनआउट का चांस हो सकता है। और ये काफी अच्छी रनिंग वहां पर इनाम की। जमील माम जहां कहीं भी है लाइट ऑन कर डालो। फिर से एक बार उठाकर मार दिया वहां पर सऊद, उसके पीछे और क्या छूटा वहां पर। एक जीवन दान यहां पर इनाम को।
इस बार बोल्ड होते हुए यहां पर इनाम, क्लीन बोल्ड होते हुए। अगले बल्लेबाज वहां पर मास्टर्स की ओर से हनीफ, स्वीप शॉट स्पेशलिस्ट। पहली ही गेंद पर मारना चाहते थे मगर वाइट का इशारा अंपायर फुरखान का वहां पर। बेहतरीन शॉट वहां पर हनीफ के बल्ले से निकलती हुई 6 रन। छक्के से अपना खाता खोला हनीफ। गेंदबाजी के लिए तबरेज आए हैं वहां पर डीसीसी की ओर से। 34, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छी शॉट वहां पर तौसीफ के बल्ले से निकलती हुई। फोर 4 वसीम। हेलो बोलो जी। क्लीन बोल्ड होते हुए यहां पर तौसीफ, इसी के साथ कप्तान अनीस आते हुए रन आउट हुए सर। बेहतरीन गेंद वहां पर तबरेज की ओर से बीट हुए अनीस।
5 ओवर के बाद स्कोर 39। अगले गेंदबाज फरीद, सामना करेंगे हनीफ। स्ट्राइक पर हनीफ। फरीद तैयार, उठाकर मारा है वहां पर, सीधा फील्डर साउथ के हाथों में गेंद, आउट। स्काई आ रहे हैं। कैप्टन अजहर, फेस 1 के कैप्टन अजहर आए हैं। अजहर वर्सेस फरीद। अच्छी डिफेंसिव शॉट वहां पर, फील्डर मुज्जू मौजूद, तो यहां पर जोरदार अपील मुज्जू की। मुज्जू रूट्स हैं ये। घुमाकर मारना चाहते हैं अनीस, वाइट का इशारा अंपायर फुरखान का। अनीस सामना करेंगे फरीद का। इनफॉर्म बैट्समैन अनीस निकल कर मार दिया वहां पर, फील्डर दौड़ते हुए, तबरेज गेंद के पास, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। एक्सपीरियंस बॉलर फरीद, सामना करेंगे अजहर। बहुत अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं मिला अजहर को। फिर से अजहर तैयार, सामना करेंगे फरीद का। फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया वहां पर, लॉन्ग ऑफ की और फील्डर मौजूद वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की। अनीस के लिए ऑफर रखा है साउथ ने, इस गेंद में छक्का लगाएंगे तो साउथ 100 रुपया देंगे। पूरी तरीके से बीट, बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन्स। आउट आउट। अजहर एक साइड से खेलना है अभी अपनी टीम के लिए। अब बेहतरीन शॉट वहां पर, शाहुल स्ट्राइक पर, सामना करेंगे तबरेज का। अच्छी शॉट उठाकर मार दिया वहां पर, बहुत बेहतरीन शॉट यहां पर शाहुल की। अजहर
पब्लिक डिमांड है आप स्कूप खेलें। कैच। वसीम, वसीम स्टेज पर देखें थोड़ा। थैंक यू। नेक्स्ट मैच बड़ा रोमांचक रहेगा, अल फतेह वर्सेस ब्लू स्टार्स। लास्ट बॉल रे सिंगल ले ले। Over next, score moves on to 45 runs. After the completion of 7 overs, score moves on to 45 runs. Last over of this inning.
लास्ट बॉल फुरकान लास्ट बॉल यहाँ लास्ट बॉल दिखा रहा भाई ओवर 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 Score moves on to 49. 50 runs required to win this match.
Last ball. Score moves on to 9 runs after the completion of first over. After the completion of 2 overs, score moves on to 23 runs.
Score moves on to 29 runs. Score moves on to 36. 35, sorry. अल फतेह के कप्तान और ब्लू स्टार के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आए। अल फतेह और ब्लू स्टार के कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए आए। ब्लू स्टार के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आए। अल फतेह के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आए।
अजर मॅच देल बाय अजर मॅच सोडदाल भावनेत जितल्या मॅन ऑफ द सिरीज मुझू
to Chan. Tries to hit dot ball. Excellent start from Al Fateh. Zishan facing Wasim. Edge and taken. Excellent bowling from Wasim. Zishan departs early, brings Rizwan to the crease. What an amazing start from Wasim, picking up 2 crucial wickets in his very first over. Rizwan facing Wasim. Plays with soft hands. Back to the bowler. Dot ball. 3 fielders allowed during the power play overs. Last ball of this over. Wasim bowling to Rizwan. Down the ground. Fielder cuts it off. Only a single. Hello? With the ball for Al Fateh to bowl over number 2 is Nayaz. Will be bowling to Rizwan. Straight back to the bowler. No run there. Over the streaks. Bowling to Rizwan. Tries to hike it. Quick work from Ejaz behind the stumps. Full toss towards the square leg region. Mansoor does excellent work from Mansoor. Only a single. Brings Ali on strike. Ali had been on the non-strikers end for a long time. Will be facing his first ball over the streaks. Nayaz too early. Tries the reverse. Beaten. Dot ball.
Beaten for pace, beaten for lack of bounce. Excellent start from Al Fateh. Tries the reverse, beaten again. Excellent bowling from Nayaz. Great start from Al Fateh. After the completion of 2 overs, score moves on to 2 runs. So far, so good from Al Fateh, conceding only 2 runs from the first 2 overs. Last over of the power play to be bowled by Ehtesham. Rizwan on strike. On the body, dot ball. Full toss towards the deep mid wicket region. Fielder fumbles, but only a single. Excellent recovery from Mansoor. Brings Ali on strike. Ali on strike will be facing Ehtesham. Towards the covers region, Sufyan. Excellent fielding from Sufyan. Tries to hike it straight into the hands of the captain. Another one departs. Rizwan back to the dressing room. Sujayat replaces Rizwan. Sujayat will be facing Ehtesham. Excellent delivery. He had no clue about that delivery. Excellent bowling from Ehtesham. After the completion of 3 overs, score moves on to 4 runs.
After the completion of 3 overs, the score is 4 runs. Towards the covers region, only a single. Again towards the railway station. Another 2 runs signaled. आगा आगा बल After the completion of 4 overs, score is 16. To bowl over number 5 for Al Fateh is Amu.
Sujayat on strike. Amu over the sticks to Sujayat. White ball signaled by the umpire. Good ball, a dot ball. Towards the square leg region. Mansoor there, can't cut it off. Boundary. Sujayat on strike facing Abu. Towards the square leg region. Goes all the way. Excellent batting from Sujayat. Blue Stars suddenly having a move on. First 3 overs, runs had dried up. Now the boundary comes. Goes again. Goes for 6 again. Things slowly shifting in the favor of Blue Stars. Two sixes, two consecutive sixes from Sujayat. Towards the mid-wicket region fielders, Mansoor. Hello. Check, check. Hello, hello. Scores 40. Check.
That's in the air. Bowler takes it. White signal. Fifty-two, 5-2. After the completion of 6 overs, the score moves on to 52 runs. A beautiful batting performance there from Ali and Akhil. After the completion of 6 overs, score moves on to 52 runs. Excellent comeback from Blue Star.
They were 4 for 3 wickets after the completion of 3 overs. They've got their scoring right in the next 3. 2 overs left. Damage control time. Goes for the sweep on the railway station. Low drops in front. Goes for 4. Excellent shot from Ali. The Wasim over the streaks to Akhil. Down the ground. Fielder cuts it off, only a single. Brings Ali back on strike. Into the railway station. Another 2 runs. Hello. Excellent batting from Ali. Tries the sweep, misses, dot ball. Last ball of this over. Tries the sweep, made it, lost, full toss onto the body. Dot ball. After the completion of 7 overs, score moves on to 60 runs. मंसूर उन्हें पीछे खेलने को ही ना उनको बाहर भेजे बाउंड्री के. To bowl the last over of this innings, it's the captain himself. Up against him is Akhil on strike. Away from the tramp line, given as a wide. On the cut. Fingertips to the ball, but the ball races to the boundary. Over the streaks, Wasim to Akhil. Again on the cut. They run the dangerous single.
Ali on strike will be facing Wasim. Excellent bowling from Wasim. Dot ball. On the body. Dot ball again. Few words from Akhil. In the air. Fielder goes round and round but takes it eventually. Ali departs. Excellent inning from Ali comes to an end. To face the last ball of this innings, in comes Inayat. Inayat will be facing the last delivery. Run out. Blue Star have managed 66 runs. That means Al Fateh requires 67 runs to win this contest.
That's a beautiful shot there from Mansoor. That's 6. That's huge. 6 to start off. Mansoor's off the mark with that huge 6. A beautiful shot there. Zishan giving some tips to Faraz. Here goes Faraz again to Mansoor. A swing and a miss. Mansoor is completely beaten by the pace of Faraz. Trying to go another huge one. Mansoor has made up his mind that he'll go huge or he'll go home. Mansoor facing Faraz. That's a full shot there. Chance of a run out there. An overthrow. Sujayat is not happy. And that's a single converted. Another thing gets it there, chance of a run out, but fielder fumbles. Another single there. After the completion of first over, the score moves on to 9 runs. The score is 9 runs. Farid bowling the second over for Blue Stars. Wasim on strike. Wasim trying to go huge, completely beaten by the pace of Farid. Another dot ball there. Oh, that's a wicket. Wasim departs, walking back to the pavilion. That's a brilliant piece of work there from Zishan behind the wickets. And the next batsman walking onto the middle for Raksa is Ehtisham. Another huge hitter. Farid doing some field changes there for Ehtisham. And that's another good shot there. That's in the air. Will this go all the way? Yes, it does. That's huge. That's 6 runs. Ehtisham is off the mark of his first ball with a huge 6. That's out of the park. That was a brilliant shot there from Ehtisham's bat.
Ehtisham having a check on the ball. That's a good comeback there from Aksa. Here goes Farid again. Ehtisham trying to hit the reverse sweep, but completely beaten. That's a full toss again. Another good shot there from Ehtisham. Another boundary. Back-to-back boundaries. Ehtisham is dealing with only boundaries as of now. Farid is under pressure. Already conceded a huge 6 and a 4. Ehtisham trying to go huge for another one, but that's just a single, and that's the end of the second over. After the completion of 2 overs, the score moves on to 20 runs for the loss of 1 wicket. The score moves on to 20 after the completion of 2 overs for the loss of 1 wicket. Sujayat bowling the 3rd over for Blue Stars. Another short ball, another beautiful shot there from Ehtisham. That's 1 bounce, 4 runs. That's a tremendous shot there from Ehtisham's bat. 4 runs to start off the 3rd over. That's in the air again, that's in the air. Will this go all the way? Yes, it does. Another 6 runs. क्या होना फरहान बॉल बॉल कहते हैं जमील था फरहान तुम्हारे पास नहीं है अच्छा मंसूर बॉल ऑन यू That's another 4 there from Ehtisham's bat. That's in the air as well. And that's a brilliant catch there. A good watch from the fielder until the last second. Ehtisham departs after a good little knock. A good little cameo. Ehtisham is disappointed. But the trees were not in his favor. He's walking back to the pavilion with a lot of disappointment. And the next batsman walking on to the middle is Ajaz.
That was a quick single there from Ejaz. That's the end of the third over. After the completion of the power play, the score moves on to 35 runs. 35 runs after the completion of 3 overs for the loss of 2 wickets. Faraz bowling the 4th over for Blue Stars. Ejaz is the man to face Faraz. Ejaz trying to be a bit cheeky there, but completely beaten by the pace of Faraz. Another full toss there. That's no ball signal by umpire Wasim. Square leg umpire. Umpire's call is the final call. Requesting the players not to argue. And that's a no ball signal. And that's a free hit there. Ejaz gets a free hit. And here goes Faraz. That's straight to the fielder's hand. That's a single. Mansoor facing Faraz. That's a beautiful shot there from Mansoor. Another 6. That's out of the park. That's 6 runs. पुराना बॉल बॉल 1 मिनट फरहान पुराना फरहान बॉल को किसे भेजे पूछ रही बॉल को ऊपर है Mansoor having a check on the ball. दो बॉल 300 ये फरहान उसमें सेलेक्ट करना That was a brilliant 6 from Mansoor's bat, and we've lost the ball. Faraz bowling to Mansoor again. That's another brilliant shot. That's like a rocket. Another 4 runs. That went in like a bullet. Back-to-back boundaries from Mansoor. Mansoor on strike again.
Mansoor trying to go huge again, but settles for a single. What an exciting batsman we have here on strike. Mansoor has got the entire crowd on their toes, on the edge of their seats. Ijaz. After the completion of 4 overs, the score moves on to 48 runs. A cheeky shot there from Mansoor. 2-run signal from umpire. And that's 50 up for Al Fateh. Another 17 runs required. Zishan to Mansoor. That's a beautiful shot there. Will this go all the way? Yes, it does. That's out of the park. 6 runs. That's on the Everest, not Mount Everest, Everest Theatre. That was an outstanding shot from Mansoor's bat. Trying to play the reverse shot, but beaten. Another good shot there, one bounce, boundary. Beautiful batting there from Mansoor. Mansoor trying to play cheeky. Whenever he's trying to play cheeky, he's not going for a huge shot. Sat.
Another good catch there from the same fielder. Watch the ball until the last second. And the new batsman departs. 7 more runs to win. Danish is the new batsman for Al Fateh. New batsman Danish on strike facing Farid. A beautiful shot there, a beautiful dive from Danish. He knows what his team needs now. A single repeat the strike and give it to Mansoor. The dangerous Mansoor on strike facing Farid. A swing and a miss, batsman completely beaten. Danish having a chat with Mansoor. That's in the air, that's it! Mansoor finishes off in style! That's 6 runs, that's it! Al Fateh's beaten Blue Star single-handedly by Mansoor. Beautiful batting there from Mansoor. Al Fateh is happy by the way Mansoor is batted. Al Fateh, I am sure Al Fateh is going to be proud of the way Mansoor is batted. A brilliant piece of fielding there from Mansoor. I'm sorry, batting. Requesting Mansoor to please come on the dais to collect his man of the match award. Give it up for Mansoor, Team Al Fateh. Give it up for Mansoor. Brilliant batting there from Mansoor. The man of the match for this match.
मैच जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों बैट्समैन मौजूद, फारूक स्ट्राइक पर, नवीद नॉन स्ट्राइक पर। बॉलिंग का आगाज करेंगे फराज फरहान। फरहान का सामना करेंगे फारूक। फरहान गेंद करने के लिए तैयार, फारूक को अच्छी गेंद हल्के से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। अगली गेंद फरहान की फिर से फारूक को। इस बार खेल दिया हल्के से, वहां पर 1 रन। फरहान का सामना करेंगे नवीद। खेल दिया है हल्के से, जब तक फील्ड होती थोड़ी मिस फील्ड हुई, इसका फायदा उठाते हुए 1 रन। अगली गेंद फराज की, इनका सामना करेंगे फारूक। फिर से खेल दिया वहां पर 1 रन के लिए। अच्छी बॉलिंग अच्छी बैटिंग का मुजाहरा दोनों टीमों से। अगली गेंद फरहान की, जिनका सामना करेंगे नवीद। उत्साह बोल्ड हुए नवीद, वहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा फरहान द्वारा। इस तरह पहला विकेट गिरा। नए बैट्समैन तौसीफ फारूक का साथ देने के लिए आ रहे हैं। फरहान गेंद करने के लिए तैयार, तौसीफ को। उठाकर खेल दिया, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पीछे, कोई मौका नहीं। इस तरह पहली बाउंड्री, चौका मारा तौसीफ आते ही। स्कोर पहुंचा 7, 1 विकेट के नुकसान पर।
नए गेंदबाज शाहिद को लाया गया है। फारूक इनका सामना करेंगे। शाहिद गेंद करने के लिए तैयार। खेल दिया फारूक। यहां पर रन लेना चाहते थे, मना कर दिया तौसीफ ने। वहां पर कोई रन नहीं। अगली गेंद फिर से एक बार फारूक को। फॉलो थ्रू में फील्ड किया, अच्छी गेंदबाजी। खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर। फारूक खेलने के तैयार। शाहिद का सामना करेंगे। बीट हुए वहां पर फारूक। शाहिद की अगली गेंद फिर से एक बार फारूक को। इस बार खेल दिया वहां पर, कोई मौका नहीं फील्डर को। 4 रन। बहुत अच्छी शॉट फारूक की वहां पर। अगली गेंद शाहिद की, फिर से फारूक को। इस बार रिवर्स शॉट खेल दिया है यहां पर। रेलवे स्टेशन में 2 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद।
अगली गेंद शाहिद की, जिनका सामना करेंगे फारूक। फिर से रिवर्स शॉट और नो बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए फारूक अपनी टीम के लिए। अगली गेंद शाहिद की, फिर से एक बार फारूक को उठाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। शाहिद की अगली गेंद, बीट हुए फारूक वहां पर। इस तरह ओवर स्कोर पहुंचा 18, 2 ओवर होने के बाद और 1 विकेट का नुकसान। एटीन 18 18। आखिल जहां कहीं भी है वो स्टेज पर आए। आखिल नए गेंदबाज माजिद तौसीफ इनका सामना करेंगे। आखिल जहां कहीं भी वो स्टेज पर आए। उठाकर खेल दिया तौसीफ यहां पर और ये 6 रन। बहुत अच्छी शॉट तौसीफ की। तौसीफ खेलने के लिए तैयार। फिर से उठाकर खेल दिया है। धुएंधार बल्लेबाजी तौसीफ की वहां पर। 6 रन। आखिल जहां कहीं भी वो स्टेज पर आए। आखिल जायद की अगली गेंद तौसीफ को। धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए तौसीफ आप तलक।
इस बार सीधे खेल दिया वहां पर फील्डर दौड़ते हुए, दूसरा रन मुकम्मल किया वहां पर, 2 रन। जायद की अगली गेंद तौसीफ को, फुल टॉस गेंद थी वहां पर, इस बार कोई रन नहीं। जायद की गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर, अच्छा कमबैक जायद का। गेंद करने के लिए तैयार जायद, इस बार फुल टॉस खेल दिया यहां पर, फील्डर जब तक फील्ड होती 1 रन। समाप्ति 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा 33 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। थर्टी 30 पर 3, 33। शाहिद को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, तौसीफ इनका सामना करेंगे। तौसीफ अब तक अच्छी बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए, देखना शाहिद का सामना करते हैं। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली लाते हुए वहां पर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर। शाहिद की अगली गेंद हल्के से पुल कर दिया वहां पर, 1 रन। शाहिद का इस बार सामना करेंगे फारूक। कवर्स में खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर। शाहिद फिर से एक बार फारूक को गेंद करने के लिए तैयार, इस बार फारूक ने उठाकर खेल दिया वहां पर, और ये अच्छी सी कैच सीधे बाउंड्री के करीब दूसरा झटका लगा। अली ने अच्छा सा कैच पकड़ा वहां पर, इस तरह दूसरा विकेट गिरा। नए बैट्समैन वसीम उर्फ डीजे शाहिद का सामना करने आए हैं। शाहिद का सामना करेंगे डीजे वसीम। खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा शाहिद का। शाहिद गेंद करने के तैयार, इनका सामना करेंगे वसीम। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा रिजवान का वहां पर।
शाहिद फिर से एक बार वसीम को गेन करेंगे, बीट हुए वहां पर, अच्छी गेंद थी। शाहिद फिर से एक बार गेंद करेंगे वसीम को, इस बार खेल दिया यहां पर, जब तक फील्ड होती 1 रन। 30 पर 7 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर, 4 ओवर खत्म। 37 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फरहान को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, वसीम इनका सामना करेंगे। उठाकर खेल दिया वसीम वहां पर, गेंद सीधा झाड़ियों में, जब तक फील्ड होती 1 रन। फरहान इस बार तौसीफ सामना करेंगे। तौसीफ अब तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम के लिए। उठाकर खेलना चाहते थे तौसीफ, बीट हुए वहां पर, अच्छी गेंद थी फरहान की वहां पर। फरहान फिर से एक बार तौसीफ को गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर। फरहान फिर से एक बार तौसीफ को गेंद करने के लिए तैयार। फिर से बीट हुए तौसीफ वहां पर। फरहान गेंद करेंगे, जिनका सामना करेंगे तौसीफ। बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अब तक फरहान। तौसीफ समझ नहीं पा रहे हैं गेंदों को। अगली गेंद फरहान की, फिर से एक बार तौसीफ को। हल्के से पुल कर दिया वहां पॉइंट पर, 1 रन। कैंडिडेट फरहान इस बार डीजे इनका सामना करेंगे। इस बार सीधे खेल दिया वहां पर, जब तक फील्ड होती 1 रन। स्कोर पहुंचा 41, 40 पर 1। स्कोर पहुंचा 40 पर 1, 41, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिरदौस उठाकर खेल दिया डीजे वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की। अफवान 1 ही रन मिलेगा।
फिरदौस की अगली गेंद इस बार तौसीफ इनका सामना करेंगे। आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर। बहुत अच्छी गेंद फिरदौस की। यहां पर फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी कैच। आते फिरदौस ने विकेट झटका लिया, तीसरा झटका लिया। तौसीफ आउट होते हुए पवेलियन वापस। 3 विकेट। नए बैट्समैन मोहसिन आ रहे हैं, उर्फ मामा। मामा ये एक छक्का रे मामा, ये एक मार बस। फिरदौस गेंद करने के लिए तैयार मोहसिन मामा को। उठाकर खेल दिया मामा वहां पर, और ये बाल बाल बचा। इस बार 2 रन दौड़ लिए वहां पर। फिरदौस की अगली गेंद, बीट हुए मामा वहां पर। अच्छी गेंद थी, स्लो डाल दिया बॉल वहां फिरदौस। मामा समझ नहीं पाए, बीट हो गए। अगली गेंद, और स्कोर पहुंचा 44, 40 पर 4। 6 ओवर खत्म हुए 3 विकेट के नुकसान पर। 40 पर 4, 44, 44 क्रेडिट। अफवान को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। आओ भी जरा जल्दी बाहर। रहीम, फरीद, आप जल्दी। उठाकर खेल दिया यहां पर। जब तक फील्ड होती 1 रन। मामा एक मार मामा, कैंडिडेट। अच्छी शॉट वहां पर सीधे फील्डर के हाथों में। बैड लक मामा, पूरी शॉट मारो मामा, आधी पीधी शॉट मार को जा रही वापस। चौथा झटका लगा। शाबाश, शाबाश को लाया गया है।
अफगान का सामना करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर रिजवान का। खेल दिया वहां पर, जब तक फील्ड होती 1 रन। अफगान का सामना करेंगे इस बार वसीम। वसीम तैयार, उठाकर खेलना चाहते थे और ये चमत्कार हो गया विकेट कीपर के हाथों में। कैच देते हुए वसीम पेविलियन वापस। 5वां विकेट गिरा। नद्दू जहां कहीं भी क्रीज पर आए बैटिंग के लिए, हम आपके पैंट देखना चाहते हैं। उतर उतर जाती है वो। स्पीड सादिक, आज अंपायर का इशारा आउट। शाबाज आउट होते हुए पवेलियन वापस। एक और तौसीफ की आमदनी हुई यहां पर। सादिक का साथ देने के लिए आए हैं। अफगान का सामना करेंगे। हल्के से फ्लिक कर दिया वहां पर। 1 रन। स्कोर पहुंचा 40 पर 8, 48। फिरदौस को लाया गया है बॉलिंग के लिए। तौसीफ इनका सामना करेंगे। अच्छी गेंद, कुछ चमत्कार नहीं कर सके फिरदौस वहां पर। कैच हो सकती थी वो। अब्दुल खादर ने अच्छा ट्राई किया कैच का। कैंडिडेट हो गए वहां पर। अच्छी गेंद थी वहां पर। सादिक बीट हुए। इस बार उठाकर खेल दिया है सादिक ने 6 रन के लिए। अच्छी शॉट सादिक की। थोड़ी लूज बॉल थी, उठाते हुए 6 रन। फिर जो उसकी अगली गेंद फिर से सादिक को। इस बार कवर्स में खेलना चाहते थे। बीट हुए वहां पर। अच्छा कमबैक फिरदौस का वहां पर। अगली गेंद फिरदौस की। सामना करेंगे सादिक। फिर से घुमाकर खेलना चाहते थे। बीट हुए वहां पर। सादिक सामना करेंगे फिरदौस का।
आधी पिच पर आकर खेलना चाहते थे, बीट वहां पर इस तरह पूरे ओवर खत्म। स्कोर पहुंचा 50 पर 5 और जीतने के लिए 50 पर 6 रनों की जरूरत 8 ओवरों में।
दबंग 11 के सलामी बल्लेबाज इलियास और हुसैन। बॉलिंग का शोर संभालेंगे मोहसिन मामा। हवा में खेल दिया इलियास, पहली ही गेंद झाड़ों के दरमियान गई और फारूक के क्या छूटी। और इनफैक्ट 6 रन का इशारा। पहला बॉल एक बार मामा को, पहला मार इलियास की तरफ से, फिर से एक बार मामा। शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर खेल दिया है। क्या छूटी वहां पर फील्डर से। वसीम स्ट्राइक पर पहली बार हुसैन सामना करेंगे मोहसिन का। बेहतरीन गेंद थी, अंपायर रिजवान का इशारा वाइड। एक और रन का इजाफा दबंग 11 के स्कोर पर। फिर से मोहसिन तैयार के हाथ से खेल दिया है इसको, स्कोर लेग की जानिब। एक आसान सा रन। रिवर्स खेलना चाहते थे इलियास, बीट हुए मोहसिन। फिर से एक बार सामना करेंगे इलियास का। बेहतरीन शॉट कवर्स की जानिब। एक टप्पा खाने के बाद सीधा डीजे के हाथों में गेंद। एक आसान सा रन। काफी एक्सपेंसिव ओवर यहां पर मोहसिन का। आगे आकर बेहतरीन तरीके से खेल दिया है व्हाइट मिड विकेट की जानिब। एक आसान सा रन। इलियास को दूसरे रन की जरूरत। उसे नाखुश वापस भेजते हुए पहले ओवर के खत्म होने के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। After the completion of first over, 11 runs on the board for the Bang 11. 56 runs is the target. Looks like these two batsmen are in a hurry to finish the game. Wasim to ball over number 2. Hussain, the man with the ball. Hussain tries to switch it, beaten on this occasion. Dot delivery. Some advice there from Ilyas. Hussain once again on strike, facing Wasim. Lovely delivery played, good shot, chance if he hits. Have to wait for the umpire's call. And gone, Hussain departs. First wicket down for the Bang 11.
Firdaus, the man walking out to the center. He is at the non-striker's end. Ilyas on strike, facing DJ. Oh, switch it in the air. Fielder was placed for this. Ilyas goes, second wicket down. Dabang 11 under pressure. Both the openers now back to the dugout. Afnan, the new man in. Flighted delivery, excellent cover drive. Mohsin comes in. Easy single taken. Afnan off the mark with that single. That brings Firdaus on strike for the first time. Firdaus will be facing Wasim. Goes back foot, tries to defend. Beaten, dot delivery. Firdaus on strike. Wasim with the ball. Quicker one this time. Played towards the fielder. Dot delivery. Excellent over from Wasim. Comes to an end with the dot delivery. And the score moves on to 12 runs. Just a single and 2 wickets in this over. Shabazz, the new bowler for Rangers. Afnan, man on strike. Shabazz to Afnan. Lovely delivery, trying to cut. In fact, a defensive shot. Dot delivery from Shabazz. Lovely delivery right up on the block hole. Wants a quick single. Gets it easily at the end. Excellent bowling here from Shabazz. That quick single brings Firdaus back on strike. Farooq there having an advice to the bowler. Speed Sadiq on the deep mid-wicket boundary. Slow delivery, watchfully played by the batsman, gets an easy single. Shabazz to Afnan. Lovely defensive shot, straight to the fielder. Some sensible cricket there from the batsman and the bowler. A good delivery, a good defensive shot, straight to the fielder. Oh, lovely delivery, goes on the back foot. Excellent bowling here from Shabazz, giving nothing to the batsman. Here comes Shabazz. Oh, goes for a big one in the air. Fielded down. He is just a spectator. 6 runs. Good hit there from Afnan.
Slightly over-pitched and getting the right treatment from the batsman. Three overs gone, 20 runs on the board. A huddle there from the Rangers. Finally giving the ball to DJ, who did a brilliant job in his first over. Picked up the wicket of Ilyas and gave away just a single. A lot of field changes. Arvaz side now. Close field set up there. 3-man in the catching position. Here comes DJ. Flighted delivery beats the batsman completely. Excellent ball. Oh, lovely delivery on the block hole. Missed by the keeper, doesn't matter. Another dot delivery. Good bowling here from Wasim. Here comes Wasim. Flighted delivery, tries to play a big one. Gets some bat on the ball. Played towards the mid wicket. Spits Sadiq down there. Gets an easy single. Afnan on strike, facing DJ. Lovely shot down the ground, straight to the fielder for an easy single. Lovely hit over the head of the bowler, one bounce, straight to the fielder. One more run added to the total of the Bung 11. Chance if it hits. A very bad throw there. Once an overthrow. Speed Sadiq comes in. No chance for the second one. 4 overs gone. 24 runs on the board for the Bung 11. "24 balls, another 32 runs required." Mohsin, who was very expensive in his first over, gave away 11 runs, is back in attack for Rangers. Here comes Mohsin. Drifting down the leg side, wide signal by the umpire. Short delivery, goes back foot, pulled away. 6 runs. Bowling halfway down the pitch and getting the right treatment.
सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है कवर में देखेंगे साहब पावा उसके 2 स्टेप नीचे क्या होगा भाई बॉल को गई क्या रिजवान पुराना बॉल में खिलाओ Rizwan. Tinath Martin. Lovely delivery, goes back with play, straight chance at the non-strike is it. Bat throw there from Naveed. Mohsin once again to Afnan. Lovely delivery, goes back foot, misfield there from Asif, resulting in a quick single. Quick delivery, sensibly played by Firdaus towards fine leg. Gets an easy single. Rotate the strikes. That brings Afnan back on strike. Mohsin to Afnan. Lovely delivery, lovely shot, straight down the ground. Wasim does well to stop. Gets an easy single. At the moment, the momentum of this game shifting towards the Bang 11. Firdaus on strike. We haven't seen a switch hit from Firdaus yet. Here comes Mohsin. Goes for the big one in the air. Wasim under it. Takes a good weight catch. Waited and waited. 4 overs gone. In fact, 5 overs gone. 34 runs on the board. 18 balls. Another 22 more required. Farhan, the new batsman for the Bang 11. Afnan on strike. Spit Sadiq with the ball. 18 balls, 22 more required. Lovely delivery right up on the block hole.
Lovely shot towards the covers field. It comes in. Takes a good catch. Another wicket down. Captain Dabang comes out with his bat. 16 balls. Another 22 more required. Lovely delivery, chance at the last strike is in. Asif fumbling once again. Farhan on strike for the first time, facing split Sadiq. No ball signaled. Non-striker wants a bye. Send back. Free hit. Split Sadiq. Split Sadiq to Farhan. Oh, goes for the big one. Is this a six? No, it's a catch, but it's a free hit. Farhan. Split Sadiq to Wasim. Slow delivery gets him bad on the ball towards the fine leg. Gets the first one hard. Will they go for the second? They decide not to. Sadiq to Farhan. In the air. Was just away from the field. Chance at the strike is in. Have to wait for his call. 6 overs gone. 39 runs on the board. Twelve balls. Another 17 more. Who's it going to be? It's going to be Shabas to ball over number 7. 17 more required of 12 deliveries. Shabas making some field changes. Cheeky work done there. Ball hitting the ball, comes back to Naveed, does well. 1 run taken. 11 balls. Another 16 more. Lovely delivery, dot one, beaten.
Shabas. Oh, lovely delivery, wrapped on the legs. Gets some bat on the ball. Ball traveling towards mid wicket. Speed Sadiq comes in, cuts it off. Easy single taken. Farhan back on strike. Definitely a boundary is required of this delivery for the Bung 11. Can Shabazz pick a wicket for Rangers? Here comes Shabazz. Tries a switch it on the legs. Dot delivery. Shabazz to Farhan. Slow delivery played away into the gap. Wasim does well to stop it. Easy single. End of the over. 7 overs gone. 42 runs on the board. 6 balls. 14 more runs required. Six balls, 14 more required as Arbaz takes the ball to bowl the last over. Six balls, 14 runs. बच्चे पीछे साइड में आ बड़ा. Here comes Arbaz to Farhan. Short delivery, tries for a big one. Farhan decides not to go. This is interesting. Farhan is trying to win the game for the Bung 11. He has decided that he is not going to run. He is going to finish the game in boundaries. 5 balls, 14 more runs. Farhan on strike. Short delivery towards the mid wicket. Runs the first one very hard. Fielder down there. Comes in, throw. The keeper's in. Have to wait for the umpire's call. And gone. Farhan. Farhan departs. Another 30 more required. Majid. Majid, the new batsman on strike. 4 balls, 13 runs more. Oh, goes for the big one in the air. Asif down, takes a catch. Another wicket down. अंदर ही भी ना हमारा रन रेट माइनस में है, प्लस में ही.
भाई जिस किसी की भी गाड़ी गेट के पास ही मेहरबानी फरमा कर हटा ले, थोड़ा एम्बुलेंस आ रही है वहां से, मेहरबानी फरमाकर टू व्हीलर्स अपने थोड़ा गेट के पास से हटा लें। एम्बुलेंस आ रही है, एक पेशेंट को शिफ्ट करना है। अरबाज टू शाहिद, oh tries for a big one, beaten. Abbas to Shahid. Wide signal, wants a single. Wants a bye, sent back by the batsman. Dot delivery, in fact, wide delivery. Oh, Shahid plays a big one in the air, fielded down, just short of him after hitting the trees. 2 runs taken, excellent bowling here from Arbaz. One ball, 10 runs. Shahid goes back foot, plates. Oh, misses. 4 runs of the last delivery. Rangers winning this game by 5 runs. दीनू और रिजवान से गुजारिश है
Subramani to start the proceedings with the ball for Aqsa cricketers. Mujahid, the man on strike. At the non-strikers end, Sultan's captain Farooq. Here comes Subramani. Mujahid tries to switch it straight away, beaten. Dot delivery, very important game from Aqsa cricketers' point of view. Subramani to Mujahid. Cleans him up. Inside edge onto the stumps. Mujahid departs. First wicket down for Sultans. Afroz, the new batsman, out at the center to replace Mujahid. Lovely delivery, good shot there from the batsman, tapped away, misfield from the fielder. Gets an easy single, Zishan on the short square leg. Sultan's captain Farooq on strike. Subramani with the ball. Drifting down the leg side, wide signal by the umpire. Subramani once again to Farooq. On the body, dot delivery this time. Good start here from Mani with the ball. Lovely delivery, good shot from Farooq, straight to the fielder, no run scored. Delicately played once, a single sent back by Afroz. That's the end of a very good first over from Subramani. First over gone, 2 runs on the board with the loss of Mujahid's wicket. Rahim to ball over number 2 for Aqsa cricketers. Here comes Rahim.
Tapped away, wants a quick single chance. It's fumble there from Imran, resulting in a quick single for Sultan. Reverse sweep. Trees put down by Shoaib. Straight to the fielder. Shoaib fumbling again. Another quick single. Quick delivery this time from Rahim. Beats the batsman completely.
Lovely delivery, safely played by Hafiz. Back to the bowler. Here comes Tanzim. Lovely delivery played towards the square leg. Wants a single. Sent back by Farooq. Another dot delivery. 3 overs gone. 17 runs for the loss of 2 wickets. शहर से हाली में पक गया रह के मैं तो या चाली में दिन रात सो के सपने सजाया लंच होगा दुबई में डिनर बाली में निकला हूँ घर से मैं पैसा उठा के दादर से सीधा दुबई को जाते मुंबई में रह के मैं हो चुका बोर दिल तो ये बच्चा है दिल मांगे मोर टिकट कटाया वीजा लगाया पहली फुर्सत में ही छोड़ा ये मुंबई।
Lovely shot from Farooq, gets an easy single. Oh, goes for a big one in the air. Please come into the picture, just away from the fielders. 4 fielders waiting for the catch. And the ball falling in no man's land. Two runs taken. Rahim to Hafiz. Goes for another big one in the air. Chance for the bowler. The captain of Oxa Cricketers is not happy. Was not sure what was Subramani doing or what was the bowler thinking of. Rahim to Hafiz. Bad bounce there for the fielder. Easy single taken. Good bowling. This is from Rahim. End of the over. 33 runs on the board after the completion of 5 overs. वैसे किसी से कोई एड नहीं है मेरे जैसा कोई साइलेंट ही चुनो काम ज्यादा ताकत है साइलेंट ही चुनो Imran to ball over number 6. Hafiz, the man on strike. Short delivery, outside the ground for 6 runs.
This time in the air. Someone is under it. Abra takes a good catch. Hafiz departs. With the new man in. Shuffles across. Tries to play first ball boundary. Gets some bat on the ball. Gets in run. Wants a second. Farooq nowhere interested. Yo, boys. I am single.
Lot of discussion there between the Sultans. It's going to be Abid to ball over number 4. Lovely shot into the gap. One bounce fielder does well. Afroz does an excellent job on the boundary. That single brings Mars back on strike. Dot delivery. Every single ball the keeper is making field changes. Here comes Abid. Mars trying to sweep that one. Beaten on this occasion. Takes it on the body. No ball signaled. Free hit. Ay, chapdi. Abid once again to Mars on a free hit delivery. Mars trying to play a big hit, beaten, excellent bowling from the bowler. Goes back foot, tries to play a big heap. Misfield there, lazy running between the wickets from Amir. Two more runs added to the total of Aksa cricketers. Short delivery. Fielder puts it down. Mujahid. That was an easy catch. Put down by Mujahid. 4 overs gone. 24 runs on the board for Aksa cricketers for the loss of 1 wicket.
Arbas to ball over number 5. 24 balls, another 34 more required. Here comes Arbas. Short delivery, but with some extra pace in it. Beating the batsman, hitting it on the body. Dot delivery. Short delivery. Beaten once again. 2 dot deliveries, 22 balls, another 34 more required. In the air. Easy single. Lovely delivery. Excellent bowling here from Arbaz. Batsman struggling to get runs. Full toss delivery. Finds the fielder. Amir departs. A big wicket here for Aksa cricketers. Stunned silence at the ground as the captain of Aksa cricketers walks back to the dugout. Left-handed Tanzim walking out with his bat to join Maz at the center. Here comes Arbas. Excellent pace there. Tanzim trying to smash that one out of the ground. Just a single run of the tower, 25 runs on the board after the completion of 5 overs. "18 balls, 33 more required." Abid back in attack to bowl his second over. Flighted delivery, wide given by the umpire. Request Hafiz not to question the umpires. Wide given.
Dot delivery. Mas trying to smash that one out of the ground. It's Furqan sledging with the batsman. Just away from Furqan. Runs the first one hard. Mas always wants a second. No chance though. दो बॉल आकी दो रन आकी Hey Wasim, order डालो Wasim. अंपायर वसीम जरा व्हाइट लाइन के पाउडर डालो भाई left hand Tanzim on strike, slip in place for the left hander. No ball signaled. No ball. Free hit. Short delivery, getting the right treatment. 6 runs. Chance if it hits. He misses. Quick single taken. Abid Tumaz.
Catch put down by the captain. One more run added to the total of Aksa cricketers. So far, this has been one of the expensive overs in this innings. From Abid. "11 runs so far, with one delivery to go. Here comes Abid. On the legs, no chance for him. Six overs gone, 36 runs on the board, 12 balls, another 22 more required. Twelve balls, 22 runs, 11 runs per over. Extra pace on this delivery. Mars departs inside edge and onto the stumps. Shoaib walking out to the center to replace Mars. Here comes Afroz. Oh, what an in-swinger delivery. Cleans him up. Another wicket down. Excellent bowling from Afroz. Rahim, the Pollard, walks out to the center. 10 balls, 22 more runs. Afroz on a hat-trick. In the air, in the air! What was the fielder doing there? That should have been a hat-trick. Hafiz showing the replay. Here comes Afroz, this time to the left-handed. Slow delivery, change of pace. Excellent bowling here from Afroz. Here comes Afroz. Short delivery played away into the gap. One bounce, two bounces to the fielder. Tayyab does well. One bounce throw to the keeper. Another 20 more required. What an over this is from Afroz.
Short delivery pulled away, fielded down on the mid wicket. Mujahid doesn't make a mistake this time. Sends back Rahim. Bravo, the new batsman for Aqsa Cricketers. Tanzim will be the man on strike. 6 balls, 20 runs. Six balls, 20 runs as Imran takes the ball to bowl the last over. First 6 is theirs now. In the air, twist coming to the pitcher, just away from the fielder.